and good morning, everyone. Before starting this knowledgeable event, I would like to pray to Ma Saraswati, the name of knowledge. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self realization. Saraswati Namastubhyam Varde Kam Rupini Vidyarambham Karishyami Siddhar Bhavtu Me Sada. On behalf of management and Education Society, Principal Dr. Gurcharan Das sir, HOD, Captain Devinder Gera sir, faculty and organizing team of Commerce Department, I, Kinza Chaudhary, Assistant Professor, Department of Commerce, feel highly delighted and honored to extend my warm welcome to all presented here for the live webinar on intellectual property rights, which has been very evolving topic and is associated with each and every aspect. Now, I would like to invite Dr. Robin Anand, Associate Professor, Department of Commerce, to welcome our esteemed guests and give a brief introduction about the webinar and start this event. Over to you, sir. Thank you, Kinza. A very good morning to all of you. Myself, Dr. Robin Anand, Organizing Secretary of this seminar. Good morning, all dignitaries, guests, delegates, and fellow participants. With great joy, I welcome you all on behalf of Education family. Manohar Memorial College is premier postgraduate co-educational college of higher education, having multi-faculty accredited grade B by NAC, established in the year 1970. The college is run by Manohar Memorial Education Society. With over 3,400 students on its rolls, the college excels in various fields of academic, sports, cultural, and co-curricular activities. The college offers graduate and postgraduate courses in arts, commerce, science, and UGC-sponsored add-on courses. The college is always ready for new challenges in educational and research field. In this continuation, today, Department of in collaboration with Directorate of Higher Education Panchkula organized one-day online national seminar on intellectual property rights. As we know, intellectual property protection is critical to fostering innovation. Without protection of ideas, businesses and individuals would not reap the full benefit of their inventions and would focus less on research and development. Due to COVID restriction, we are organizing online national seminar. With regard to this seminar, more than 75 participants are participating from different institutes. Last but not least, I am very much thankful to Chief Guest Dr. Rajendra Rana sir, Principal, who give us precious time with regard to this. Once again, I welcome you all. Over to Ma'am Kinza for further proceeding. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our principal, sir, Dr. Gurcharan Das, who himself is an eminent personality and a very good speaker, to formally welcome our chief guest, Dr. Rajinder Singh. Over to you, sir. धन्यवाद किंजा। सर्वप्रथम मैं मनोहर मेमोरियल कॉलेज के 51 वर्ष पूरे करने पर सभी अतिथि सहबान को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों को, पार्टिसिपेंट्स को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि मनोहर मेमोरियल कॉलेज पर सभी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। आज के इस सेमिनार के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राणा, प्रिंसिपल एसडी कॉलेज अंबाला कैंट, विशिष्ट अतिथि और कीनोट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर विकास चौधरी, एनआईटी कुरुक्षेत्र, और आज के इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर सुरेंद्र कुंडू, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, एंड
प्रोफेसर अशोक कुमार मक्कड़, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। और आज के इस सेमिनार के चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर महेश मेहता जी, प्रोफेसर ज्योति नागपाल और इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कैप्टन देवेंद्र गेरा, डॉक्टर रोबिन आनंद, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर प्रोफेसर विनोद कुमार, डॉक्टर भव्या मुखी, डॉक्टर विकेश सेठी और उसकी टेक्निकल टीम, सभी का मैं मनोर मेमोरियल कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। विशेष तौर पर आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि वो सदैव मनोहर मेमोरियल कॉलेज की उन्नति तरक्की के लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की गतिविधि हो, एक्टिविटी हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना हो या नेक से संबंधित कोई भी जानकारी हमें लेनी हो, तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राणा हमारी सदैव मदद ही नहीं करते, अपितु हमें मार्गदर्शन भी करते हैं और अपने स्टाफ सहयोगियों को भी निर्देश देते हैं कि मनोहर मेमोरियल कॉलेज की उन्नति तरक्की के लिए जितना कुछ बन पाए वो एसडी कॉलेज को करना चाहिए। इसके लिए राणा साहब, मैं आपका मैनेजमेंट की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर परम आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट श्री और एडवोकेट विनोद मेहता जी ने भी आपका आभार व्यक्त किया है कि आप सदैव हमारा मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहे, क्योंकि जब मैं एसडी कॉलेज में विजिट किया तो प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से एक हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज अगर है तो वो एसडी कॉलेज के रूप में है और आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इस सेमिनार में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय पर आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आभारी हूं आज के कीनोट स्पीकर जो कि प्रोफेसर विकास चौधरी जी एनआईटी कुरुक्षेत्र से हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार आज के इस सेमिनार में रखेंगे। मैं विशेष रूप से डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मनोहर मेमोरियल कॉलेज को इस तरह का सेमिनार आयोजन करने की अनुमति प्रदान की। मैं सभी अतिथि साहबान का, जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रोबिन आनंद जी ने बताया कि देश से हमारे साथ 75 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुई हैं और राणा साहब, हमने क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जो अप टू मार्क रिसर्च पेपर हमारे पास सबमिट हुए उन्हीं को ही हमने सिलेक्ट किया। हमारे पास गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से भी पेपर आया, ऐसे जैन कॉलेज अंबाला से भी हमारे पास रिसर्च पेपर आए और बार एसोसिएशन के एडवोकेट साहबान ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की अपनी इच्छा जताई। एक बार फिर मैं विकास चौधरी जी जुड़ चुके हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आज का जो सेमिनार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रति दिशा निर्देश देने में और इसमें क्या खामियां हैं और किस तरह के प्रावधान हैं बताने में हमारा सहयोग करेगा। इसके लिए मैं सभी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मुख्य अतिथि साहबान का। अभी विकास चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों का, कि उन्होंने इस सेमिनार को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our chief guest, Dr. Rajinder Rana, Principal, SD College, Ambala Kent. Before sharing the screen with him, I would share some of his achievements from this endless list. To name a few, his journey of 28 years has been full of awards, achievements, nominations, and recognitions. He has been the main face behind getting A+ rank to SD College, Ambala Kent. He has edited 4 books, published and presented various papers in national and international journals and conferences, has helped over 500 students to get placements in various MNCs, has been nominated for various awards in the field of education and extracurricular activities, has been awarded Haryana Youth Red Cross Shield by the Governor of Haryana,
Dr. Saab, you have made us all proud with your distinguished work in numerous capacities. Over to you, sir. Am I audible? Yes, 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 sir. sir. Yes. Thank you. Thank you very much. At the onset, I would like to thank the management, Principal Dr. Gurcharan Das. ऑडियो किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ इट. प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचरण दास जी, कैप्टन देविंदर गेरा जी, डॉक्टर रोमिन नंद, IQC coordinator of the Manohar Memorial College, participant from different part of the country. सर्वप्रथम मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन IPR, लेकिन जो कुछ भी हमने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर किया है या जो मैं फील करता हूं कि होना चाहिए, दैट आई विल लाइक टू शेयर. Otherwise, Professor Vikas Chaudhary is there, Professor Kundu is there, Professor Ashok ji is there. They are the expert in this field. They will share their knowledge and will enlighten you all with the IPR in the state, in the country, or in the world over, what is the practices going on. But I would like to share my views, especially what we have to do. जब से ही ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे ट्रिप के नाम से जानते हैं, जब से हमने उसे अडॉप्ट किया है, जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर्स हैव स्टार्टेड फंडिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ्टर स्पेशली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रिप. और जो नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो भी इंक्रीज हुए. लेकिन जो सच्चाई है कि स्पेशली द यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर, दे आर द डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द इनोवेशन एंड रिसर्च, particularly in the emerging economy. The potential pool of talent for the innovation in these economies, they are largely from education institutions and research institutions. We can talk about USA, Japan, China, Korea, whatever country we talk. Majority of the innovators, they comes from the universities, the higher education institutions and research institutions. और ये पॉलिसी है, इसका मेन फोकस भी to promote the innovation and creativity, especially among the entrepreneurs and in higher education institutions. And we all have to tap the creativity and innovation in India with a special emphasis on the startups and education institutions. इसके लिए कुछ UGC ने भी स्टार्ट किया है. UGC have also recommended कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR का एक जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को CBCS के अंदर स्टार्ट करना चाहिए. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, सो दैट ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट, वेदर दे आर द स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स, स्टाफ, दे ऑल शुड बी फैमिलियर विद IPR. और शायद उसी का एक नतीजा है, यदि आपने देखा होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंदर स्पेशली इस चीज को इंक्लूड किया गया. इसके 15 नंबर रखे गए हैं. ये बहुत ज्यादा वेटेज है. उसका मेन एम्फेसिस यही है कि हम सब लोग इसके ऊपर काम करें, स्पेशली टू प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे स्टेट में कह लीजिए और ऑल ओवर द कंट्री अब तो कुछ अच्छी प्रोग्रेस हो रही है. पिछले 4-5 साल के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं IPR के ऊपर. पहले हायर एजुकेशन के अंदर IPR का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था,
हमारे को तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर तो बहुत ही कम था, लेकिन नेक जब से आई है तो नेक ने इसका एक कंपोनेंट रखा है इनोवेशन इकोसिस्टम। ये सारी चीजें इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर ही आती है, और उसी का एक पार्ट था आईपीआर, और उस आईपीआर की वजह से ही हम ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सेमिनार्स हैं सारे, इसका मेन रोल यही होता है कि वी शुड सेंसिटाइज अवर टीचर्स। और यदि आप प्रैक्टिकली देखें और जब भी सर्वे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई सर्वे होता है, इवन द बेस्ट स्टेट जहाँ पर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स साउथ के अंदर ले लें, उनके अंदर भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ द स्टाफ, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अवेयर ऑफ आईपीआर। और यदि अवेयर भी है तो उनको इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पेटेंट का जहाँ तक संबंध है, बहुत ही कम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी हाई रिप्यूट्स के आईआईटीज हैं, उसके सबसे ज़्यादा पेटेंट उन्होंने दाखिल किए हैं। और उसके बाद जो नंबर आता है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर आल्सो कमिंग अप विद अ वेरी गुड नंबर ऑफ पेटेंट्स। तो फ्रेंड्स, यदि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ या हरियाणा के स्टेट के बारे में बात करें तो हम लोग वी आर लैगिंग बिहाइंड as far as the higher education institution or the colleges in the state of Haryana are concerned। अभी पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल हर कॉलेज के अंदर बनाने का सुझाव दिया है। आई डोंट नो कितने कॉलेजेस के अंदर आईआईसी वर्क कर रही हैं, एटलीस्ट इट इज वर्किंग इन अवर कॉलेज। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल हर यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये होनी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को टच किया है, चाहे वो इनोवेशन एक्टिविटी के नाम से हो, स्टार्टअप एक्टिविटीज हो, इंटर्नशिप के लिए भी उन लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं उसके अंदर, आईपीआर एक्टिविटी के लिए भी उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं उस काउंसिल के अंदर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, और अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी उसके अंदर कहा गया है कि वी शुड प्रिपेयर, एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रिपेयर फॉर अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। और उसके बाद एनआईआरएफ कोऑर्डिनेटर भी उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये 7-8 चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड करके, चाहे वो इनोवेशन की एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए हैं, टीचर्स के लिए हैं, और स्टार्टअप्स के लिए के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप के, आईपीआर एक्टिविटीज़ के ऊपर, इन सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल बनाई है। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव दिस काउंसिल। इसका एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, और उस पोर्टल के ऊपर आपको मंथली एक्टिविटीज़ अपलोड करनी होती है। सभी कोऑर्डिनेटर्स को अपनी अपनी एक्टिविटीज़ उसके अंदर लोड करनी होती है। और मैं एश्योर करता हूँ आपको, यदि हम इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म से, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म है ये, इस फॉर्म से स्टार्ट करें हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन ए नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हम एक अच्छा इनोवेशन इकोसिस्टम कॉलेजेस के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये हम लोग बहुत इस मामले में बहुत पीछे हैं। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर ऑल कम्स जब हम कुछ काम करेंगे इस फील्ड के अंदर। अभी तक तो हम जो टीचर्स हैं, वी आर राइटिंग अवर रिसर्च पेपर एंड ऑल दीज थिंग्स, हम उसी के अंदर पायरेसीज या प्लेगरिज्म को चेक करते नहीं थकते हैं। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है सभी लोगों के लिए, कॉपीराइट जिसे कहते हैं। अब तो ये हर चीज़ के अंदर है। द एक्सपर्ट्स विल टेल यू कि किस किस चीज़ों को के ऊपर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, यदि किसी देश ने प्रोग्रेस करनी है, यदि किसी भी देश ने इकोनॉमिकली एक्सपोनेंशियल राइज करना है, 2 डिजिट इकोनॉमी ने राइज करना है, तो उसके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जागना होगा और इस दिशा में काम करना होगा। यदि हम छोटे छोटे देश इजराइल की बात करें तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके भी पेटेंट्स देखें, उनके स्टार्टअप देखें, टीचर्स ने ही स्टार्टअप लगा रखे हैं। ऐसे कंट्रीज हैं, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे आर वर्किंग। अब आप देखेंगे इंडस्ट्रीज आर आल्सो हैव स्टार्टेड फंडिंग द हायर एजुकेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट्स या पेटेंट्स, जितने भी काम हो रहे हैं वो
इन कंट्रीज के अंदर तो शुरू हो चुका है, हमारे कंट्री के अंदर अब ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे लॉज तो हैं, शायद हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं दे आर वेरी वीक। तो वही कारण है कि आईफोन 11 या आईफोन 12 जैसे मार्केट में आता है, उसकी जो कॉपी है, कॉपी 1 कॉपी 2 जो पायरेटेड जितनी भी है वो अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। जिस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है, पायरेटेड चीज़ें सारी मिलनी शुरू हो जाती है। और उसका ही कारण है कि बहुत सी कंपनियां हैं जो रिसर्च के अंदर, R&D के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रही है। उसी का कारण है कि वी एज ए कंट्री आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि हरियाणा के अंदर यदि हमने ये रिप्रेजेंट करना है कल को कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की लोग कितने पेटेंट कराए हैं या कितना उनकी कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम के अंदर देश के, तो डेफिनेटली हरियाणा की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इनिशिएटिव लेना होगा, उनके टीचर्स को आगे आना होगा, इंडस्ट्रीज को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ओनली देन वी कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। बट फ्रेंड्स, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में यदि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लोग नहीं जानेंगे तो फिर बाकी आम लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं या इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कह सकते हैं। हाँ, मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे अपने कॉलेज के अंदर हमने IPR के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है। हम अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली PG स्टूडेंट के लिए तो मैंडेटरी करते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो अम्बाला साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन लोगों के लिए भी 2-3 जो सेमिनार हैं, वर्कशॉप्स यहाँ लगवाई है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ मिलके, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स देम आल्सो। और हम उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, इसी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन फिर भी मेरी आशा है कि हम सब लोग मिलकर, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हरियाणा के लोग हैं जो इनको लीड करते हैं, उनसे वो मिलके, सभी लोग मिलकर एक अच्छा इकोसिस्टम हरियाणा स्टेट के अंदर डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा तो आत्मनिर्भर हरियाणा, स्टार्टअप्स एंड ऑल दीज थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेज में भी आत्मनिर्भर हरियाणा का ही सेमिनार हमने इसी चीज़ों के लिए रखा हुआ है। उससे पहले हमने ये IIC की टीम ने पूरी वर्कशॉप बच्चों के लिए अरेंज किया 150 स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसके ऊपर एक काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूँगा कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन जरूर रखें। चाहे हम एक, जैसे मैंने अभी बताया, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल आप अपने कॉलेज में बनाएं, उसके 7-8 कोऑर्डिनेटर बनाएं। सभी लोग यदि थोड़ा थोड़ा काम भी करेंगे तब भी मिलकर एक काफ़ी बड़ा काम होगा। यदि हम अवेयरनेस ही क्रिएट कर पा रहे हैं, वो भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा ही होता है। और वो जैसे आइडिएशन, एक कंपटीशन रख लिया अपने बच्चों का कि बच्चों से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आइडियाज़ लिए हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट किए हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा होता है। जब हम ये इकोसिस्टम डेवलप करेंगे तो slowly and slowly with the passage of time, definitely in the next 2-3 years हम एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC और यू कैन से द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 सालों बाद, यदि आप टॉप की NIRF की रैंकिंग देखेंगे तो टॉप के 20 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ये जो इनोवेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके सभी के पास अटल जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं का रैंकिंग में सबसे टॉप पे हैं। तो विद दिस वर्ड्स मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को, हेड को और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड IQAC की टीम को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है और अपने टीचर्स को इसके बारे में सेंसिटाइज किया है। वंस अगेन आई thank you all for inviting me as a chief guest of this seminar. Thank you very much. Over to you, please. Thank you so much, sir, for sharing this information with us. This definitely is an addition to our knowledge. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Vikas Chaudhary, HOD, NIT Kurukshetra, Department of Humanities and Social Sciences. He has completed
2 terms successfully as HOD. He has also 30 years of experience in teaching and other curricular activities. He has also won various awards, nominations, recognitions, etc. He is our keynote speaker. Over to you, sir. Dr. Vikas Chaudhary. Thank you for introducing me. Let me start with taking it my privilege to be part of this one-day national seminar on current issues in intellectual property rights in India, which is being organized by the Department of Commerce and IQAC of this Manohar Memorial PG College, Fatehabad. First of all, let me congratulate the management of the college and principal of the college, Dr. Gurcharan Das, and the organizing team, especially Dr. Robin Anand and Dr. Devinder Gera, who are my friends also. As it gives me immense pleasure to share this information. Though many of you all know that I started my career in this very college in the Department of Commerce in 1990, way back in 1990. So obviously, it has been more than 30 years of my teaching journey, and I am very happy to be again part of this seminar because I have been associated with a lot of activities in this college even after I left the college in 1997. So as told by I think Madam Kinza that I am working in the Department of Humanities and Social Sciences and Kurukshetra. I also, express my gratitude towards Dr. Inder Singh Rana, the principal of SD College, Ambala Kent, whom I could not met 3-4 years back when I went to that college to deliver an expert lecture invited by again Department of Commerce there. But anyhow, it has been a good meeting with him right at this particular platform. Had it been an offline thing, so we could have met personally also. Anyhow, let us hope that more opportunities will be there to meet personally also. So without taking much time, I directly go to my keynote address. Let me share this screen. I think hope this screen is being visible to all of you. Nice, visible. Is this visible to you? No, what is this now? So you are audible. Okay. Is it visible also, this PPT? Yes, sir. Okay. I think let me take this thing. ये यहाँ नहीं आ रही है, देखना है. So maybe there is a glitch. Sorry, sir. Your mic is off. Okay. You're not Right. audible. I think now it is okay. Yes, sir. Okay. And something about import, importance, the role of the IPR system. Now, I think most of you may be knowing that what actually IPR is and how we go along with this particular concept. As we all know that it refers to all the creation in the human mind, right? It deals with any kind of basic construction of human intelligence, any artistic work, any literary work, technical or scientific work, right?
And when we use the word intellectual property right, that means the legal protection for such kind of creation which is being provided by a kind of property right, that is called as a intellectual property rights in India, right? And intellectual property right, basically what it is, it refers to the legal rights granted to the inventor or manufacturer to protect their invention or manufacturing of the product, right? Somebody who has manufactured or produced the product, right? And if he want to gain some kind of say protection that nobody else would be able to use it, he can then go for the intellectual property right. The system for that, I will come to that in the next few slides also, right? Now, what basically these legal right do, they confer an inclusive right on the inventor or manufacturer or its operator who will make full use of this invention or the product for a limited period of time, or maybe for a specific period as the case may be, right? And as I told you, it is a general term for assignment of property rights through patents and copyright or trademark. This allows the owner to exercise monopoly on the use of IP for a specified period. Such rights of inventor maybe you can say based upon including the right to use the IP, right to any benefit from the IP, or right to have some kind of say protection from the IP, etc. Moving on to the next slide. Uh, as I told you, some history which some of you may know or may not know. The first patent law was introduced in India in 1856, way back, right? Which was then followed by our own Indian Patent Act of 1970. The first major step towards IPR protection came in 1995 when India joined the WTO or World Trade Organization and became a signatory to trade-related aspects of intellectual property rights TRIPS, which I think Dr. Indrana also mentioned in his address, which sets the minimum standard of intellectual property regulation by the members. The Madrid Protocol, of which India is also a part, now permits the filing, registration, and maintenance of trademark rights in more than 90 countries. These are coming to the forms of IPR. There are total 7 forms of IPR which you can see in this slide. Though normally I think ज़्यादातर हम 5 की बात करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. बट जो ये 2 एक्स्ट्रा हैं, आई थिंक हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने ना सुना हो. पेटेंट इज व्हाट इट इज फॉर इन्वेंशन. कोई भी नई चीज, कोई भी नई प्रोडक्ट और नया कोई भी नया काइंड ऑफ से सर्विस है विच इज बीइंग इन्वेंटेड इज कॉल्ड एज ए पेटेंट, जिसको हम पेटेंट करते हैं कि ये मेरे नाम में पेटेंट हो गया. Copyright for any kind of artistic or literary work, like writing a book, writing even an article. अगर आप आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, उस पर आपको कॉपीराइट मिल जाता है. तभी आप देखिए किसी भी जर्नल में हम कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते हैं, तो दे सिंपली आस्क फॉर ए कॉपीराइट फॉर्म. इसका मतलब है कि उसके बाद ये उनकी वो बन जाएगी और कोई भी आपकी परमिशन के बिना उसको कॉपी नहीं कर सकता. दैट इज ए कॉपीराइट. दैट इज व्हाई प्लेगरिज्म की बात जो अभी डॉक्टर इंद्राना ने भी करी, मैं उस पर भी थोड़ा बहुत आऊंगा अभी at the end of my talk. Then we have trademark for words or symbol. जैसे किसी भी कंपनी का कोई लोगो है या ट्रेडमार्क है, that cannot be copied by somebody else, so that is a trademark. Industrial design है, किसी भी तरह की कोई industrial design which is appearing on an external part of the product, and that can also be protected. Then we have the new one which I told you, semiconductor integrated circuit layout design. This protects the layout design of the integrated circuits. Then geographical indication is used to indicate reputed natural, agricultural or manufactured product. जैसे बनारसी साड़ी आपके सामने है, या बंगाली रसगुल्ला है, कोल्हापुरी चप्पल है. These are few example. कुल्लू शॉल आप कह सकते हैं. These are the various examples of geographical indication. Even Kashmir का केसर है, that is also a kind of the example of geographical indication. Right. Likewise, we have plant variety protection and farmers' right (PVPFR), which is used to protect crop societies of new and derived varieties and farmers' rights. So, अभी खैर farm registration चल रहा है, so I will not talk in detail about that. But this is a kind of thing where any kind of say new plant variety can be protected, and this can also be given as a IPR. So these are in brief something about the various forms of IPR. Right, like I told you. 5 are such which we all know: patent, copyright, trademark, industrial design, and geographical indication. We normally come across these things, but the other 2 are the specific ones, so they add to make the total 7 forms of IPR. Then coming to the basic theme of IPR and technological development, right? As we all know, the leadership in this world in the 21st century is increasingly in the hands of those who create and harness knowledge.
This century normally, because of this particular reason, is called the century of knowledge, and it is indeed the century of the mind. That is how we can use our mind into make more innovation. Like अभी entrepreneurship और startup की बात डॉक्टर इंद्र राणा ने की, that is also one of the important thing. And he talked about that institutional innovation councils are there. मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि I think most majority of the college should also have IPR cell also, which will take care of any kind of new invention coming into that system and ensuring that this becomes a part of not only the ecosystem but also the colleges also will be able to get benefit out of that when they apply for all these kind of Atal ranking or NIRF or whatever ranking they are having into that, right? That is why we are lagging behind in this system. जितनी बार भी ये टाइम्स न्यू रैंकिंग आती हैं या और जितनी भी रैंकिंग आती हैं जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है, आई थिंक वेरी फ्यू ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन आर ए पार्ट ऑफ दैट. वो भी टॉप के 3 या 4 ही उसमें आते हैं 500 में या 1000 में. तो अगर हम इस चीज को इम्पोर्टेंट दें तो दैट मीन्स वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग आवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज एंड ओनली देन वी कैन प्रॉस्पर एंड वी कैन एंश्योर दैट the ability of the nation to convert knowledge into wealth. Knowledge तो सबके पास है. हम कई बार बैठे होते हैं तो दिमाग में आता है कि ऐसे होना चाहिए. But how many of us are able to give it a shape, और वो जो idea है वो एक conceptualized system में ना रह के वो एक actual shape, a practical shape ले, right? Only then we can convert the knowledge into wealth and social good through creativity and innovation will determine the future standing in the community of the nation. And in a highly competitive international trade, increased importance has to be placed on planning and forecasting, developing of appropriate commercial and industrial strategies by enterprises and industrial groups and countries. Now, this is a very, very important thing, that how we can bring along IPR with the technological development issues, because unless there is a lot of problem in terms of putting a lot of money into the system also, because like again something was said in the inaugural address also, that we have so many kind of say schemes or other thing. जैसे आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया है या और चीजें हैं. इवन मैं दोबारा से इनोवेशन काउंसिल में भी आता हूँ. ठीक है, हो सकता है कुछ कॉलेजेस ने इसको शुरू किया जैसे उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में बताया, but still lot of colleges have to work on that. A lot of money is required to spend on that, because sometimes we in a haste we create a lot of schemes, but when it comes to thorough implementation or effective implementation of that, we lag behind. The other few slides now you will see the data regarding the status of science and technology in different countries. You can see ये 2001 का डाटा है. भी आपको मैं थोड़ा सा और recent डाटा भी दिखाता हूँ अगली स्लाइड में. You see patent application filed in 2001 in India, अगर आप देखें 60,000. You compare it with say Argentina, even Australia, even you can say Brazil, Canada, China, Germany, right? You can see उसके बाद आप देखेंगे रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, हाईटेक एक्सपोर्ट्स एंड R&D एक्सपेंडिचर एज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर फार फार अहेड ऑफ इंडिया even as of 2001. You see even Israel, which I think Dr. Ainder Rana also talked about. उनका अगर आप GNP का परसेंटेज देखेंगे 3.62 है. A small country and doing wonder into that. Italy, जापान को आप देखिए around 3 again, right? So even Korea, Republic of Korea को अगर आप देखें, they are again around 2.5 or more than that. United States can always have more things. Even Singapore is even ahead. Mexico is also ahead ourselves. ये कुछ ओल्ड डाटा था मेरे पास. यू कैन सी दिस एक्सपेंडिचर ऑन R&D. ये आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा. 2014 में जो एक्चुअल था और 2015 का एस्टिमेशन और 2016 का फोरकास्ट, सब का रॉ डाटा भी आ गया होगा. बट एनी हाउ दिस विल गिव यू इनफ आइडिया that where we have come across R&D as to GDP. अगर आप देखेंगे इंडिया का देखेंगे तो we are still 0.85. More majority of the countries are having 1.5, 2.5, 3.5, 4 even, and even more than that also. So ये एक बहुत बड़ा issue है, that how much expenditure we are able to put on R&D, because आप स्कीम बना देंगे लेकिन आप के पास पैसा नहीं आएगा या फंडिंग नहीं आएगी तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा. इवन आपने ISC और इवन मैंने IPR सेल की बात करी है. जैसे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जब आपको कोई पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है तो लॉट ऑफ फीस आर टू बी गिवन टू जो भी ये लोग काम करते हैं, एजेंसीज काम करती हैं, एंड इट रिक्वायर्स ए ह्यूज एक्सपेंडिचर.
And I really doubt that when majority of the good institutions which are centrally funded are not able to cover up for those expenditure, how the small colleges would be able to do so. तो फिर उस केस में अगर हम देखें तो इस तरह की बात अपने आप ही व्यर्थ हो जाती है. वी हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग ऑल्सो, हाउ वी विल क्रिएट फंडिंग. इसलिए इनोवेशन काउंसिल और स्टार्टअप सेल और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, they can come up with a new idea, and some agency should take leap out of that and ensure that some kind of say financial help may be provided both at the same level and also at the government level. So this is about something data which will then focus on how IPR and technological development need to be looked into. Importance of the system, I think this has already been discussed. Let me give you some points about that. Two are the main importance. The first is the information aspect of the patent system. This is the way how information can be made available, so that any kind of say duplicative work is not you can say put into the system, because if the duplicacy is there, then obviously it will just finish off the IPR system as such. Then it is a tool for industrial planning and strategic decision making also, because a lot of kind of say decisions are basically based upon that thing. What are the various number of patented patent documents, degree of patenting activity is there, whatever, and how under the index of various countries or companies which are active in various fields of which various industries are progressing. These kind of information is available, so that you can take leaf out of that and ensure that where there is a lacking of the IPR, there you can go into that direction and make sure that the proper development takes place in terms of IPR. If you go further, IPR system is basically known to attempt to encourage and safeguard the intellectual creativity. If somebody can understand that I have done this work and this work can give me this kind of say right, so it will encourage somebody that also I should have number of patents also. अभी जैसे मुझे ये तो नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज ने किया है या नहीं किया है. जो हमारे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जैसे IITs, NIT और ट्रिपल IITs, even IIMs also, they have started giving some numbers to a patent awarded to a particular person who aspire to be in the teaching side also. I think 8 marks are given for one patent, and that is a huge thing. This kind of system should be there, so that encouragement and safeguarding what natural creativity can take place, right? It attempts to promote investment by giving a guarantee against unauthorized use of the patented inventions also to those who accept the risk of advancing from प्रोटोटाइप स्टेज टू मास प्रोडक्शन. तो अभी जैसे उन्होंने बात एग्जांपल दिया एप्पल आईफोन का, तो ऑब्वियसली आवर कंट्री इज ए यू कैन से हेवन फॉर you can say the kind of say such products which are deceptive also, right? आपको बहुत जगह दिख जाएंगे जो ब्रांड लोगो है कॉपी होते हुए सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट्स में, right? So this kind of system is there. Lot of designated markets are there जहाँ पे आपको imitated product मिल जाएंगे. So this kind of thing should not be there. It also attempts to provide consumer with the fruits of inventive and innovative activity by the large scale production and distribution of high performance and high quality goods also. We can also experience high quality goods. हम जैसे कोई भी product purchase करते हैं तो we see that ISI mark is there or ISO so and so mark is there. So that gives a kind of say confidence to use the product that it is a good quality product. इसी तरीके से आपकी जो drug manufacturing companies है, they go for IPR kind of or patent kind of things also. So IPR system attempt to do that also. It attempts also to disseminate quickly and widely new ideas and technologies by creating a public database of new inventions and technologies. अब आप देखिए, sometimes we are not able to have information access available to us that how far number of inventions have gone, or if any individual is aspiring to do some work in the IPR in a particular area, and if he doesn't have the information available कि उस related field में कितना कितना काम हो चुका है, so obviously it would be lagging behind in terms of giving a new kind of innovation also. So IPR system, if it is there, it will give us a public database also. जैसे हम किसी भी चीज का डाटा लेके ही काम करते हैं, इसी तरीके से IPR system को भी अगर आगे डेवलप करना है तो such kind of data has to be there, and so that we are able to attempt to go for something such kind of thing which is even better than the other one, right? Which is already there in the system, and how you can perform better. अब आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखिए, प्रोडक्ट है मान लीजिए, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी है,
तो वो टेक्नोलॉजी पेटेंट हो गई एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे। अब अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट लेके कोई चीज आना चाह रहा है तो वो चीज डेटाबेस में आनी चाहिए, सो दैट दैट डेटाबेस विल गिव यू एनफ आइडिया अबाउट दैट these kind of things are there, and now we can approach for a some kind of new information or some kind of new improvement also। जैसे हम रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू का पार्ट उसमें आता है, राइट। तो वो भी एक अपने आप में वही चीज है कि आपके पास डाटा अवेलेबल है कि इसमें क्या क्या काम हो चुका है और आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, सो दैट इट गिव्स अस ए न्यू थिंग। रिसर्च आल्सो इज वन ऑफ द वे ऑफ पुटिंग इट्स कंट्रीब्यूशन टू द आईपीआर सिस्टम आल्सो। Role of IPR system to stimulate inventive and innovative activity, like I already mentioned you, to encourage the development of new technology, जैसे what I just mentioned। आप देखिए जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स में नई नई टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो जाती हैं, नई नई फीचर्स आनी शुरू हो जाती हैं, ये भी एक तरीके से एक इन्वेंशन है, राइट, एक डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज है। इंजन के अंदर कोई चेंज करके उसकी माइलेज को इम्प्रूव करना, या आपको सीमलेस ड्राइविंग प्लेजर, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। Then to encourage the commercialization of invention and innovation। See, जब तक कोई भी innovation या invention और a new idea doesn't have a commercial benefit, it will lag its utility also in the system। आपने कोई चीज बना ली, उसका सोसाइटी के लिए बेनिफिट ही नहीं है, सोसाइटी उसको यूज ही नहीं कर पा रही, तो उसका जो है कोई भी फायदा किसी को नहीं पहुंचेगा, वो एक चीज बन के रह जाएगी। तो commercialization of the invention also is a part of the IPR system to facilitate access to the latest technological information and to facilitate technology transfer also। कोई चीज आपने बना ली, अब आपको लगता है कि आप उसको अपने आप उसको फर्दर डेवलप नहीं कर पाएंगे कमर्शलाइज करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज देयर। यू कैन अलाइन विद सम से एजेंसी और so that just such kind of technology transfers can also take place, right? Now coming to the last few things, conclusion, and then I will focus on some more thing without the PPT also। Like let you can see, IPR protection and awareness is still limited in India। This needs to change to foster a culture of innovation, right? Like I told you, I will come to that once I finish this thing। It is very important to protect intellectual properties for the progress of the society, as it is vital to the development of a country। If a new knowledge is made freely accessible to all, the creator will not get any incentive, so some kind of, say, licensing fees, that is why companies charge those kind of things, people have to spend a lot of money on that, right? Otherwise, if a person is unable to ensure the protection of the intellectual property, then all this effort will come to a zero, right? So he may not feel encouraged unless to create new knowledge once again. In such a scenario, the growth of society will have to be hampered। So it is very crucial to create an environment where people are incentivized for their intellectual creation। Like I just gave you example कि आप अपने बायोडाटा में अगर आप उसको इंक्लूड करते हैं तो you can get some marks which can then help you to gain promotion and all that kind of things also, right? So that they are motivated to create further such kind of the activity, right? So promotion and protection of IP will spur economic growth unless these kind of things are not you can say protected or promoted। Obviously every such kind of thing helps to increase the economic growth of the country also। It creates a conducive atmosphere for growth of industries and employment। Patents can generate revenue through technology transfer, licensing and assignment, whereas trademarks can link the product to the producer and help to build customer loyalty in the trade and business। Similar is the case with the other IPs, GIs and all those kind of the forms of the IP which I already mentioned। And now you can again see that like we are all passing through this COVID-19 scenario, still we are not out of woods। A large section of society is facing economic hardship, as we all know that a lot of people have lost their jobs, and we have always been the problem, and maybe now our economy has started to give a kind of, say, upward trajectory also। But still we feel that more innovation on IPR can provide us a good way forward। With judicious use of IPRs, one can prosper in trade and business। New startup can take the help of copyright, patent, and trademark to march forward in the market। Like we all know that Atmanirbhar Bharat or Atmanirbhar Haryana, Startup India, innovation kind of things. These are all very, very important things to ensure that how IPR can benefit the society, and so the economic growth can of a particular country can move ahead। IP assets are now considered as key benefit as a business asset of any organization in a naturally rich region like Northeast India। Registration of GI of the reputed traditional product and their subsequent strategic marketing through registration of authorized user of GI, economic prosperity can touch the rural community also।
Filing of IPR, like which I focused in the initial stages also, filing of IPR in India and our innovation index are still lagging far behind the rest of the world, as I gave you the data also. And this is what where that is being complemented with that. Most of the patents filed in India are by reputed technological firms from foreign countries. They are doing business in India and they are filing that. वो भी हमारे ही अकाउंट में चला जाता है. तो अगर वो भी ना हो तो आप समझ सकते हैं कि how much we are lagging in terms of RBI. And that is why जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं. So that is another important thing, how government has started taking initiative in that also, and but still more effort is required to come to that part, right? Now, summing up, I can only say that the colleges with the young minds have a critical role to play in the strengthening the IPR ecosystem of the country also. Therefore, such kind of organization of these seminars is a timely step, and the organizer who have organized this seminar maybe appreciated like anything. Now, coming back to a few things which I said I will discuss in the end. Like the coming to the IPR cell, this cell will undertake all those activities. Like say, if any faculty has published any paper or any project is there, that cell will take care of such kind of facilities also. And more so, such activity may be organized so frequently. Not it could be a one-time activity. ऐसा नहीं कि आपने आज एक सेमिनार कर लिया और अब आप 5-6 साल तक जो है शांत हो गए कि हमने एक आईपीआर एक्टिविटी कर दी. These kind of things should be regular one, right? कोई भी आप FDP can be organized nowadays. Colleges get a lot of grants to organize the FDPs also. Even you can organize seminar in related areas also, like ethics and values and science and technology. That also pertain to the IPR kind of things also. And वो जो IPR सेल की बात sorry IAC की बात जो पहले की गई, that also is a part of that. तो दोनों आपस में एक दूसरे को complement कर सकती हैं. And some kind of funding also may be initiated so that these kind of things may be helpful to for the overall development of the institution, and so that more and more institutions can become a part of the good ranking system which is there in the country as well as in the world also, because we have to progress further. It's not that एक चीज आ गई तो हम उसके बाद देखिए हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, right? We have to grow further also, and more such activity need to be carried on for a kind of say systematic growth to be taken in the system also. So with these words, I once again thank the organizer for giving me the opportunity to deliver the keynote address in this one-day seminar on current issues in IPR in India. Right? Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite the participants for any questions regarding this topic from sir. Sir is here with us to answer the questions. Any participants? Any queries? I think when people will have some idea about these things, only then they can ask you questions. Yes, it happens and sometimes. yes, sir. This session was very informative, so I think there are no queries. To sum up, I would say, what is intellectual property? Intellectual property refers to creation of mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, and symbols, name and images used in commerce. Am I right, sir? Yes. Very right. IP is protected in law by, for example, patents, trademarks, copyrights, which enable people to earn recognition from what they invent or create. They are basically of two types: industrial property and copyrights. Industrial property includes patent, trademark, trade secrets, etc. What is a copyright? This is the most frequently asked question. The exclusive right given by law for a certain term of years to an author, composer, etc. to print, publish, and sell copies of his original work. It is governed by the Copyright Act 1957, valid from 21 January 1958. It is introduced by civil and criminal remedies against
Infringement. Terms of copyright depends on nature of work of copyright and whether the work has been published or not. Now we will talk about ambit of copyright. It includes original literary, dramatic, musical and artistic works, cinematograph, films, sound recordings, etc. It also includes novels, poems, short stories, books on any subject, computer programs, tables, computer database, song lyrics, computer softwares, etc. I remember a case, Rogers versus Coons. Photographer Art Rogers shot a photograph of a couple holding a line of puppies in a row and sold it for use in greeting cards and similar products. Internationally renowned artist Jeff Koons ran across Rogers' photograph and used it to create a set of statues based on the image. So is this a copyright? No, this is not a copyright. Now, coming to patent. What is patent? A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. Then is novelty. An invention will be considered novel if it does not form a part of information appearing in magazines, technical journals, books, newspapers, etc. Oral description of the invention in a seminar conference can also spoil novelty. Correct me, sir, if I'm wrong. नहीं Because ठीक है as you're an expert, Hanji, नहीं नहीं ठीक है the invention is not obvious to a person skilled in the art in the light of the prior publication knowledge document. What is its usefulness? An invention must possess utility for the grant of patent. No patent can be granted for an invention devoid of utility. The patent specification should spell out various uses and manner of practices them, even if considered obvious. What are the implications of getting a patent? We will discuss on that. Once invention is safeguarded by patent, it cannot be commercially made, used, distributed or sold without the consent of the patent owner or patentee. The patent owner has the right to decide who may or may not use the patented invention during the period of protection of invention. Now the question arises how patent is important in our industrial practice. Patents provide incentives to the individuals. In particular, the inventors deserves recognition for their creativity and material reward for their marketable inventions. The incentives encourage innovation, which ensures that the quality of human life is enhanced. Protection stimulates research, which results in technological development. It enables the inventor to recoup their investment for the money and time spent developing the ideas in research and development. The use of patent documents enables future researchers not to reinvent the wheel. Right, sir? yes Now, what is trademark? A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. That what I have understood by, as told by Sir Dr. Vikas Chaudhary and Dr. Rajendra Rana. Like Coca-Cola. Coca-Cola was is registered since 1887. A trademark helps consumers to identify and choose between products, services based on their reputation and quality. When we see the tick sign, we immediately recognize that this is Nike. And Nike is registered since 1970. The shape, the theme, the logo, the symbol, the color, everything is a trademark. Now, why trademark is important? It is an exclusive legal right on our business name. Secondly, it protects your business name and gives remedy in the court in case of any infringement. If any infringement is there, it protects the business and gives the solution. A
A sound name in the market in the eye of a general public. Definitely. Creates a face value among competitors. Anybody can recognize the tick sign. Anybody can recognize the M sign with McDonald's. Anything can happen. Monopoly business name or brand is included in this. It gives a legal recognition to the business. So this is very important. That is it. Now there's a tea break of 15 minutes, and for technical session, we all have to come to join at 11 a.m. Thank you so much. Thank you.
Hello, good morning to you all. Good morning, sir. Good morning, ma'am. The inaugural session is over. Yes, sir. Okay. Sir, we will resume this session in another 3 minutes. Okay, no problem. I'm with Yeah, you. yes, sir. Yes, sir. Welcome back. We are here with this very informative webinar on IPR. We have already heard to Dr. Rajinder Rana and Dr. Vikas Chaudhary. Before starting this technical session, I would request our participants to join as soon as possible so that there is no glitch and to avoid any confusion. Now, I would like to invite Dr. Surinder Pal Kundu, who is Professor and Chairperson, Department of Commerce, Chaudhary Devilal University, Sirsa. He has been Dean, Faculty of Index Studies, CSRU, Jeend. He has also been Principal, University College, CDLU, Sirsa. Director, Youth Welfare, CDLU, Sirsa. Deputy Controller of Examination, CDLU, Sirsa. Director, Youth Welfare, CRSU, Jeend. He has published 6 books till now. He has completed major research projects and innovative projects have been completed under his guidance. He has also published and presented various papers in national and international journals. Over to you, sir. Okay. Am I audible, ma'am? Yes, sir. सर नमस्कार जी। Sir, namaskar, namaskar. आपका Sir, बहुत respected बहुत स्वागत principal. सर। जी, आपने sir. कीमती समय। So nice of you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Very good morning to you all on this August occasion of the online seminar, or you can say that is webinar, as well as the workshop or the conference. Any name can be given at this juncture, because of you all know that we are feeling every time
a particular space that we have to interact with each one through the online media or the offline media. But nowadays, due to COVID-19 pandemic, it is not possible for us that we have to check out such kind of the things. But before going to the topic concerned, or before going to the seminar or the webinar concerned, I just welcome you all, respected Principal Dr. Gurchan Das of this Manohar Memorial Postgraduate College, and the other fellow colleagues who are working in this esteemed institute, and my dear students and participants, and dear learners. We are here to interact with each one so that we can assume and presume that what kind of the action is to taken with regard to establishment of any kind of the like patent, copyright, intellectual property rights. As you all know, the theme of this program is current issues in intellectual property rights in India. My dear participants, I have to say and I have to convey to you all that it is not meant for India. It is giving the glimpses of all type of the issues which are related to intellectual property rights in India as well as the outside the India or the world. Throughout the world, there is a sense of belongingness that we have to see what kind of the patents, copyrights, and intellectual property rights are to be conducted. If I am or a particular artist is blowing a whistle, that can be patented. If a person who or he or she has an event, for example, he or she is clapping with single hand, that may be patented. But point is that there are so many organizations which are meant for the purpose of registration of the patents or the copyrights and intellectual property rights, as the name you can convey. Today, as far as the session is over, in case of the inaugural session, the August speaker's keynote address has introduced or gave, you can say, glimpses of the intellectual property rights. Why and how, and what is their relevance at the global level, or you can say international level, national level, and the local level. Today, in the street, or you can say these are the streets of our villages, you can see there are so many intellectual persons are going, and they are coming out of that particular local community, and they are demanding, okay, I can prepare or I can manufacture a particular colored that can be patented. Goldsmith is there, sandsmith is there. They have so many kinds of the intellectual property with them. But the question is, or the point is that we have to take a framework and we have to invite those people, okay, please come and join the hands. For what purpose? For the purpose of the registration of that particular product. As the Union Government of India or our respected and honorable Prime Minister Shri Narendra Singh Modi, they conveyed that we have to invite those people who have any kind of the talent, but that should be registered on a particular portal. If you will visit gov.in, you will see a different innovative ideas are there. They have been patented, they have been registered with different societies. One more, I can take an example, Amrit Dhara, the panacea for the health. Amrit Dhara is a particular medicine
meant for Ayurveda, in which different kind of the natural resources are clubbed together for the benefit of the health, but there is no any pharmaceutical background. There is no any registration of that particular Amrit Dhara at the local level. Therefore, I suggest here, being the resource person of this particular webinar and seminar, that we have to invite those people who are far, far away from these institutions, these organizations, universities, colleges, etc., etc. For that purpose, we will invite them. Please come, join hands, and get registered. With these ideology or with these ideas, I hand over the mic to the anchor of this event to proceed further. If any kind of the suggestion is to be invited from my side, I will convey. And now you can invite the people or the participant to present their papers in this particular session. Dr. Kinja Chaudhary, mic is to you. Not audible from your side. टेक्निकल सेशन सर आई एम गोइंग टू हेल्प। Okay. सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति नागपाल, गृह विभाग अध्यक्षा, आज के सेमिनार के टेक्निकल सेशन में आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अभी हम सब ने इनॉग्रल सेशन के बारे में सुना, जिसमें आज के सेमिनार करंट इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आज के सेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेंद्र कुंडू जी, जो कॉमर्स विभाग से संबंध रखते हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से सर आप संबंधित हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। और आपने अपने जो विचार हमारे समक्ष रखे सर, वाकई में वो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि आईपीआर से संबंधित जानकारी आम जनता के बीच में नहीं है, आम लोगों के बीच में नहीं है। और इस जानकारी का मुझे लगता है कि लोग इसका फायदा उठा के आगे अपने भविष्य में इसका योगदान इससे ले सकते हैं। थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। टेक्निकल सेशन में पेपर प्रेजेंटेशन की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चौधरी देवीलाल सिरसा यूनिवर्सिटी सिरसा के कॉमर्स विभाग के रिसर्च स्कॉलर मिस्टर कमल गोयल को पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करती हूं, जिनका विषय ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेजिस्लेशन इन इंडिया, एक कॉन्सेप्चुअल व्यू पॉइंट है। सर प्लीज ज्वाइन अस पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मिस्टर कमल गोयल। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। I'm audible or not? ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Screen visible है मैम मेरी PPT? यस, इट इज विजिबल। ठीक है। Good morning to all of you. I am Kamal Goyal, research scholar, Department of Commerce, Chaudhary Devilal Vishwavidyalaya, Sirsa. I am here presenting a research paper on trade-related aspects of intellectual property rights and intellectual property rights legislations in India, a conceptual viewpoint. First of all, we have the TRIPS. The WTO is a globally international organization that is established on 1st January 1995 in Geneva, Switzerland, where 164 member countries are representing 98% of the world. There are some agreements in WTO that includes goods, services, intellectual property, dispute settlement, and trade monitoring. In these, I focused on intellectual properties. So the paper studies the role of intellectual property, that is trade-related aspects of intellectual property rights in India. First of all, what is intellectual property? Intellectual property is what is mind creativity that include invention, literary and artistic works, symbols, names, images and designs used in commerce. Then intellectual property.
intellectual property is divided into two parts. One is industrial property and next is copyright. Industrial property includes invention, trademark, industrial design, geographical indication, and in copyright we have literary and artistic works. इस पेपर में हमने क्या करा, इस पेपर में हमने ये स्टडी करा कि जो ट्रिप्स जब आया तो ट्रिप्स के जो एग्रीमेंट्स थे, जो ट्रिप जो चीजें लेके आया उसको हमने इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया, उसके बारे में हमने स्टडी करा। आई थिंक कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई है, मे बी सब इंटरनेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल करना चाहूंगी। ये कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम से इनका जो फर्स्ट कैंडिडेट जो पेपर प्रेजेंट कर रहे थे बीच में कुछ हिंड्रेंस हो गई है। नेक्स्ट हमारे ही कॉलेज से तान्या मेहता हैं, ये फिजिक्स विभाग से संबंधित हैं। इनके पेपर का विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए व्यू। तान्या मेहता, प्लीज ज्वाइन अस। Good morning, all of you. Am I audible and my screen is visible? Yes. Okay. So मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी सर भी बोल रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ तान्या मेहता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम दिस एस्टीम्ड कॉलेज। So my brief overview would be there regarding IPR, basics of IPR, what actual intellectual property is. So I came across these two very animated pictures. You can have idea that you have insurance, so does your home also. Why not your idea? So हमें पता है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट होंगी। हमें पता है हमारा घर है, हम रह रहे हैं, एक लैंड है वो मैंने ऑक्यूपाई कर रखी है, एक लैपटॉप है, एक प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है। बट जो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, फ्रॉम माइंड पर्सपेक्टिव, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है IPR, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अंदर एक टर्म आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल basically means not having physical presence, okay, or you can say that it is your intangible property, okay, it's a new innovation from your mind। आगे देखा जाए बहुत अच्छी बात है कि हमें पता है हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम घर में रह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, किसी शोरूम में जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, कोई आइटम्स हम बाय कर रहे हैं, सो वी नो विल गेट बिल और हमें पता है ये हमारा है, ये चीज हमारी है। बट अगर हम नॉर्मल बात करी जाए, बीइंग ए टीचर ऑल्सो, बीइंग ए academician also, we are so much interested in writing things, okay, we came across, हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में हमारे सामने आती हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई बुक लिख रहा है, ओके, कोई नॉवल लिख रहा है, कोई बेसिकली अगर बात करें कोई पोयम ही लिख रहा है, ओके, पोयम्स का आइडिया आया, उस आइडिया को किस तरह से एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं प्रोटेक्शन के बारे में आज हम इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। बहुत अच्छी लाइन है, इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक अप द राइटफुल प्लेस इन ग्लोबल एरिना ऑफ क्रिएटिविटी and innovation, not only as creators and innovators but also as owners of IP. You should own intellectual property, yeah, you should be able to fulfill, yeah, you should be able to justify, yeah, this is my work, I have created this from my knowledge। अगर नॉर्मल टर्म्स में आईपी की बात करें तो जैसे अभी सर ने भी बताया, कमल सर बता रहे थे कि इट इज रिजल्ट ऑफ योर थॉट, योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट इज योर क्रिएशन ऑफ योर माइंड, जो हमारे दिमाग में आया, ओके। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, साइंटिफिक इन्वेंशंस, केमिकल फॉर्मूलाज, प्रोग्रामिंग की बात करी जाए,
इमेजेस की बात करी जाए, लोगोज की बात करी जाए, डिजाइन्स की बात करी जाए, कुछ नेम्स की बात करिए, कुछ स्पेसिफिक कोई ब्रांड वैल्यू की बात करी जाए, कुछ इमेजेस की बात करी जाए, सो वी हैव अ ब्रॉड टर्म दैट कंस्टिट्यूट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So according to World Trade Organization, if I go by the definition of IPR, it is the rights given to a person over the creation of their minds. जो हमारे दिमाग से आया है, जो एक्चुअली हमारे इंटेलेक्ट से, हमारे माइंड से आया है. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. ऐसा नहीं कि अगर मैंने वो बुक लिखी है, अगर कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग में बात करी जाए कि 60 इयर्स या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो हमारी रहेगी, उस टाइम के बाद उस स्पेसिफिक ऑनर का, उस स्पेसिफिक क्रिएटर का या कंज्यूमर का उस चीज पे अधिकार नहीं रहेगा. दैट वुड बी फ्री एक्सेस टू ऑल पब्लिक, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी. फिर आगे अगर हम बात करी जाए आईपीआर की, दे आर द इंटेंजिबल इन नेचर एंड ऑल गिव एक्सक्लूसिव राइट्स टू इन्वेंटर और क्रिएटर फॉर देयर वैल्यूएबल इन्वेंशंस और क्रिएशंस. आजकल हम देखते हैं डिजिटल टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, गूगल पे पड़ी है, इंटरनेट पे पड़ी हैं, हमें पता है सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं. सो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू हैव एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. हम ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ने की बात करते हैं. सो बीइंग ए साइंस टीचर, हम नॉर्मल अपने साइंटिफिक जर्नल्स खोलते हैं, क्या उन्होंने प्रोसेसेस करे, क्या उन्होंने रिसर्च करी, उनका क्या आउटकम आया. तो इन चीजों के लिए क्या वो चीज हम सर्च कर रहे हैं, क्या वो सच्ची में उसके कंज्यूमर ने उस पर राइट दिया है? कैन वी इजीली एक्सेस दैट? कैन वी कॉपी दैट डाटा? Can we copy that data and just put it into our own research paper? ये different criteria हैं जो IPR के अंदर आते हैं. और अब मुझे लगता है for a teacher it's a very beautiful tool, very informative, very profound tool जिसको हम use कर सकते हैं अपनी property को बचाने के लिए. Which property? I'm not talking about land property. हमें पता है हमारा घर है, सब कुछ हमारे आसपास है, हमें पता है. But the terms जो इंटेलेक्ट में आती हैं, जो हमारे माइंड से क्रिएटेड करी गई हैं, इसके अगर बेसिकली टर्म में बात करी जाए तो वी हैव टू कंपोनेंट्स. वन इट इज योर इंटेलेक्चुअल पार्ट, सेकंड वन इज योर फिजिकल पार्ट. व्हेन वी टॉक ऑफ इंटेलेक्चुअल पार्ट, इट इज इंटेंजिबल पार्ट. ओके, दैट इज क्रिएटिव वर्ड्स, जब मैंने पहले भी बताया, इन द फॉर्म ऑफ आइडिया, कंसेप्ट, डिस्कवरीज, एक्सप्रेशन ऑफ these elements that is protected by IPR. For example, patent. बहुत टर्म्स आजकल हमने वेबिनार में भी सुनते आए हैं. उसने पेटेंट करा रखा है, ओके, इसकी कॉपीराइट है. मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगी. कोई नॉवल हम पढ़ते हैं, उसके सेकंड या फर्स्ट पेज पे एक ब्रीफ में दिया होता है, एक सिंबल होता है सी इंसर्कल्ड वन, कॉपीराइट, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड. वो इसी इंटेलेक्चुअल पार्ट में ही आता है. दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए, दैट इज फिजिकल पार्ट. फिजिकल पार्ट की बात, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मीडियम, जिसको हम टच कर पाए, ओके, जिसको हम फील कर पाए. फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ बुक. ओके, फिजिकल बुक की अगर बात करी जाए तो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या होगा, कौन सा पेपर है, ओके, इंक लगी, उसकी बाइंडिंग हुई. सो दीज टर्म्स कम इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल पार्ट. नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो हम बहुत सिंपल सुनते आए हैं, चोरी हो गई, ओके, जब ये जो चोरी हुई, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो आज का हमारा टर्म है, टॉपिक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग, somebody came and just took your wallet, okay, that comes under the illegal possession of movable property. Second one, when we talk of immovable land, पता है हमारा घर है, कहीं छीन के कोई नहीं जा सकता, ओके, ओके, किसी घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, ये चीजें हमसे नहीं छीन सकती. सो दे कम्स अंडर द इलीगल पोजेशन ऑफ इमूवेबल. अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ आइडिया आया मेरे पास, ओके, द सेम आइडिया केम टू माय फ्रेंड आल्सो. तो क्या वो चोरी कर लेगी? क्या उसने चोरी कर लिया? हम बहुत जगह कार्टूनिस्ट ऐसे देखते हैं कि एक पर्सन है, एक पर्सन ड्राइंग कर रहा है, ओके, उसी के साथ एक और पर्सन ड्राइंग कर रहा है. वो अपना दिमाग नहीं लगा के वो फर्स्ट वाले पर्सन की चीज को डायरेक्टली कॉपी कर रहा है. सो दीज इलीगल पोजेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स अंडर द वायलेशन ऑफ ए लॉ, जिसको हम ब्रॉड टर्म में बोल देते हैं इन्फ्रिंजमेंट. व्हाट इज दिस इन्फ्रिंजमेंट? द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ, एग्रीमेंट, एक्सेट्रा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वायलेशन. When I was talking about copyright infringement, see when we go for अगर हम कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई बुक कोई देख रहे हो, तो हमारे पास ये टर्म आता है, सी इंसर्कल्ड वन, अमीश त्रिपाठी 2008, ओके, कॉपीराइट लिखा है, फिर आगे लिखा है ऑल राइट्स आर रिजर्व. ऑल राइट्स आर रिजर्व का मतलब है जिस पर्सन ने ये कॉपीराइट आगे फाइल करा हुआ है 2008 में, ये कहता है कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड in any form without the prior permission of the publisher. Publisher आप बच्चे प्रेजेंटेशन को आप चोरी नहीं कर सकते, इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसका डाटा उठा के एज इट इज नहीं ले जा सकते.
So these comes under the तान्या copyright एक मिनट infringement. सुनिए, तान्या तान्या प्लीज आपकी सुनिए। प्रेजेंटेशन को आप आगे कीजिए, इसकी प्रेजेंटेशन आपका Okay. फर्स्ट पेज ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, फर्स्ट is my slide visible? Not only Oh, is my first slide visible, sir? first slide is visible, not more than that. No, I am. Yeah, now okay. Advantages Actually, of protecting IP. मैंने स्लाइड शो करा हुआ था, आई थिंक सो मे बी ड्यू टू Okay, no problem. Now it is visible. ओके You are at the first slide or second slide? नो आई वाज ऑन थर्ड फोर्थ स्लाइड सर, डोंट वरी। ओके Okay, So- skip it. Okay. हाँ जी, मैंने स्लाइड शो करा हुआ था, तो बेसिक टर्म्स के बारे में हमने बात करी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात करी, फिर हम आए कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी कोई चोरी कर रहा है, कोई आइडिया हमारा चुरा रहा है, तो वो कैसे इन्फ्रिंजमेंट की टर्म्स में आता है। ओके, तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, आई थिंक वेरी यूजफुल है, जो आर्टिस्टिक वैल्यू, जो ऑथर्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा टर्म है, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है, वो कॉपी नहीं होना चाहिए। लोगो कॉपी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके लिए एक ट्रेड सीक्रेट की तरह कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी को आगे शेयर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, अगर बेसिक इसकी बात करी जाए, ये मैंने अभी छोटे सा टर्म डिस्कस करा था कि व्हाट इज दिस आईपीआर। आगे फिर हमने बात करी जाए, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि नॉर्मल की व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस, अगर नॉर्मल एक आर्टिस्टिक वैल्यू की बात करी जाए, एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर हम आईपीआर को अपनी टर्म्स में इम्बाइब कर रहे हैं। ये क्रिएटर को इनोवेटिव होने का एक आइडिया प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखा है, मैंने कोई नॉवल लिखा है, तो आई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो, फॉर सोसाइटी यूज ऑल्सो। फिर नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारे पास, एक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक कंपटीशन लेवल को बढ़ाता है। ओके, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है कि कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं जो यूजुअली यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से हुई, जब वो नेशनल आईपी अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करे थे। जो उसके कुछ की इनिशिएटिव्स हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहूंगी कि उन्होंने 80% फी कंसेशंस दिया स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल एंटिटीज के लिए। उन्होंने कुछ फी कंसेशंस प्रोवाइड करा, लाइक 10% रिबेट ऑन ऑनलाइन फाइलिंग। ओके, अगर आईपीआर फाइलिंग प्रोसीजर्स की बात करी जाए, वो बड़ा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, एक टाइम बाउंड हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर्स विल बी इजीली एक्सेसिबल फॉर आईपीआर, वे जल्दी से अपने आईपीआर फाइलिंग प्रोसीजर्स की तरह एक्टिव रहेंगे। अगला जो, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अगली जो की अचीवमेंट्स रहा, अगर इस पेटेंट एग्जामिनेशन टाइम में, अर्लियर इट वाज 72 मंथ्स from December 2016, now it has been reduced to 12 to 24 months in December 2020। इस रिडक्शन की वजह से हमारे पास जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस हैं, उसके अंदर काफी सारा ग्रोथ हुआ है। लाइक अर्लियर वी हैड जस्ट 18 lakh during 75 years for the time 1940 to 2015, now it has been increased to 14.2 lakhs। अगर नॉर्मल ग्रांट फाइलिंग की बात करी जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइलिंग का जो रेशियो है, it has been increased from 4,227 to 28,391। ओके, अगला अगर टर्म की बात करी जाए हमारे पास, जो आई थिंक स्लाइड शो में प्रॉब्लम है, द मोमेंट आई गो टू माई ओल्ड स्लाइड, दैट प्रीवियस स्लाइड्स कम्स इन बिटवीन। ओके, पेटेंट फाइलिंग की फिर मैं बात करी थी कि जो इंडिया की रैंकिंग की बात करी जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इट हैज बीन टू अ वेरी ग्रोथ, नाउ इट इज 48 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और जो मिशन, हमारा विजन आगे फ्यूचर में हम बात करी जाए, इट इज टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ बीइंग इन टॉप 25 नेशंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, अगर ओके मैम, इज माई स्लाइड्स विजिबल? Are you able to hear me? Yeah, okay, continue. Okay, please. I would
बेसिकली कंक्लूड दैट बीइंग ए टीचर, बीइंग ए आर्टिस्टिक वैल्यू, अगर जो एकेडमिशियन है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू इन योर क्रिएटिविटी, इन योर लिटरेरी वर्क, इन योर आर्टिस्टिक वर्क, in any sort of work, so these rights grants you assurance for your protection कि कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कोई इसको कॉपी ना करे, कोई प्लेगरिज्म ना आए. तो इन अ नटशेल, if I have to conclude, I think there is a problem with my slide. So if I have to conclude that creativity is linked to very essence of human nature, critical thinking or reflection on more profound issues is impossible without creativity. जब तक हम क्रिएटिव नहीं होंगे हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. और इस क्रिएटिविटी को इनहांस करने के लिए आईपीआर ने बहुत अच्छी प्रोटेक्शंस दी हैं. बहुत कॉमन फॉर्म्स की प्रोटेक्शंस की बात करी जाए, जो सभी बताएंगे या सर भी बता रहे थे, पेटेंट्स की फॉर्म में, ट्रेडमार्क्स की फॉर्म में, ट्रेड सीक्रेट्स की फॉर्म में, जोग्राफिकल इंडिकेशंस की फॉर्म में. सो वी हैव इंश्योरेंस ऑफ क्रिएटिविटी. So IPR ensures that creators will be recognized for their efforts and protected from infringement. IPR provides way to come up with more new creations. Overall, if I have to justify, it promotes creativity and innovation of a nation to all. ठीक है? Thank you so much. Thank you so much. मैडम अनम्यूट कीजिए प्लीज. जी पार्डन सर. या कंटिन्यू प्लीज. नेक्स्ट डेलीगेट जो है वो मिस्टर सत्यानंद जी हैं, जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग से संबंधित हैं. उनका पेपर प्रेजेंटेशन का विषय है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट सिटी स्टडी. एक स्टडी के रूप में वो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बताएंगे. सर प्लीज ज्वाइन अस. मिस्टर सत्यानंद. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning to all of you. Uh, Thank you, everyone, and thank you, first of all, to the organizing committee of this one-day national seminar to give me an opportunity to present my paper. Can screen is visible? Hello. अभी तक नहीं दिखाई दे रही. स्क्रीन विजिबल नहीं है. Okay, ma'am. I will try. आर यू रेडी? Yes, ma'am. Ma'am, can screen is visible now? Yes, it is visible. Okay, ma'am. Um, I would like to start my paper presentation. My topic of presentation is a role of information and communication technologies (ICT) in smart city mission a study. I myself Satyanand, research scholar, Department of Commerce, Sri Lucia. Under the supervision of Dr. Surinder Singh, I would pursuing my PhD. So I would start my paper. First of all, in abstract, it is written that I have the present paper is an attempt to explain the different roles of ICT in the smart city mission. The result shows that the conceptual study was found that ICT plays an effective role in the development of smart city mission. Now, first of all, I would like to introduce the smart city mission. A smart city concept basically includes public capital, individual capital, and ICT infrastructure in order to deal with people issues, enlarge the quality of life of its people, proper utilization of limited resources, and to accomplish a sustainable growth. As a smart city mission was started by our Prime Minister Sri Narendra Modi in India on 25th June 2015 for developing 100 smart city based on ICT and IoT, Internet of Things.
as why it is essential here to discuss the smart city mission, because due to limited resources available in the globe, but people are widely and vastly moving from rural to urban areas to live a comfortable lifestyle. But as resources are limited, so it is not possible for everyone to live a comfortable and sufficient life in such a crowded and populated cities. So it is necessary to build a smart city. एंड सेकंड इज पिलर्स ऑफ स्मार्ट सिटी. अगर हम पिलर्स की हम बात करें, तो इसमें हम बेसिकली जैसे ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज की हम बात करते हैं, जिसमें कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि आपको डिफरेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और एप्लीकेशंस, और उसमें आप रिड्रेसल अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं. सेकंड इज वेस्ट मैनेजमेंट, and third is water management, fourth is energy management, next is urban mobility, and last is telemedicine and you can say skill development centers. And here it is. Second is physical infrastructure. As we know that in smart city, what physical infrastructure plays a role, the people of the city plays a crucial role in the adoption, implementation, and changes of infrastructure of a city. So, thus, proper planning, training, and awareness based on the ICT and IoT technology should be provided to every individual of the city on different social media platforms about the, you can say, importance, use, and requirement of the smart city concept in today's era, as shown in the figure. Next is social infrastructure. If we can talk about the social infrastructure of a city, then if all the elements of social infrastructure are well built and connected through ICT and IoT based equipments, then it is very comfortable for all of us to enjoy every services and avail different goods and services, and to also we can easily live a comfortable lifestyle with limited sources. Fourth one is economic infrastructure. As we can show, the banking, finance, insurance, business, and trade facilities in the city should also be pre-planned and managed effectively and efficiently based on the technology, so that but it provide a easy and fast platform to invest for investment to the people of the city. Thus, it will generate a lot of employment opportunity. Also, you can say for the youth in the city, example, e-banking and e-trading. In COVID, also e-banking and e-trading and e-business will growing very fastly and vastly they were working. So it will also create a lot of employment generation. If we talk about the present issues of India's, throughout the India, in one of these less developed countries of the globe with just 27.78% of higher population existing, at present India is facing a serious disaster of urban growth in the world. While urbanization has got a lot of been a tool of political, economic and social growth, सो इसमें हम प्रेजेंट इशू की हम बात करें तो डिफरेंट इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है अर्बन कोलैप्स, सेकंड इज ओवर क्राउडिंग, थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट. सो अगर हम स्मार्ट सिटी की हम बात करें कि इसकी नीड क्यों पड़ी और स्मार्ट सिटी को किस वे में हम गवर्नमेंट इसको बिल्ड कर रही है और हाँ एवरी इंडिविजुअल का उसमें क्या रोल है. तो फर्स्ट इज अर्बन कोलैप्स. As we have discussed, both in geographical area and population of quickly increasing cities in the basic region for urban problems. In the majority of cities, the monetary base is not sufficient expert of dealing with the problems. Second is overcrowding, as it is mentioned in the screen in the data that in census 2001, Delhi has a population bulk of and 9,340 person per square kilometer area, which is the uppermost in India. This is the general population thickness for the Union Territory of Delhi. Third is unemployment. City people being without a job in India are predictable at 15 to 25% of labor strength.
percentage की हम बात करें, still almost skipped people. It is predictable that about partly of how educated city employed are determined in 4 urban cities: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Fourth one is slums. As we sees that the slums, why it is created in India, the fast urbanization in combination with industrialization has resulted in the expansion of slums. The creation of India's slums occurs, ये इस रीजन से होते हैं ड्यू टू lot of factors, जैसे कि इसमें lack of building plan for housing, the high prices of land away from the accomplice of urban deprived, a large entry of countryside migrants, जिसके कारण से slums की problems इंडिया में create हो रही है। और उसको दूर करने के लिए एक स्मार्ट सिटी कंसेप्ट एक अच्छा एक मीडियम है, जो कि अभी धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है इन इंडिया। इन हरियाणा also 2 cities were developed, Faridabad and Karnal. Last is fifth is water facilities, and another is electricity, in which also different ICT and IoT based technologies were working very fastly in order to solve the problems of water and electricity. And last is your transportation. In transportation also, government has done many incentives initiatives for solving the transport problems. Like India has started CNG vehicles, electronic vehicles, as well as metro in different cities as well as in different parts of the country. And next is the फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल्स इन ए स्मार्ट सिटी वुड कंटेन्स। इसमें क्या होना चाहिए जो कि स्मार्ट सिटी को बूस्ट अप करता है और उस स्मार्ट सिटी मिशंस को हम इजीली उसको परफॉर्म कर पाए। फर्स्ट इज सफिशिएंट वाटर सप्लाई, सेकंड इज रीजनेबल हाउसिंग particularly for the deprived, certain electricity supply, cleanliness together with solid waste management, वेल ऑर्गेनाइज अर्बन मोबिलिटी, जैसे कि उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम ले सकते हैं, strong IT connectivity and digitalization. Seventh is sustainable surrounding. Next is protection and safety of people, mainly women, kids, and the aged. Superior governance, particularly e-governance and civilians involvement. And last is physical condition and educations. As we talk about the components of smart city, basically there are 6 components of smart city on which smart city mission is running in India also, and working on about 100 smart city mission is still going on. First is smart people, so smart environment. Second is smart people, smart living, smart economy, smart governance. Overall, to next is literature review. I have conducted a different 13 to 14 literature review from till 2014 to still at present 21. Finally, the objective of this paper is to identify the role of ICT in smart city mission. And finally, what I conclude that the proper and suitable implementation of the smart city concept है वो depend करता है कि proper planned and well managed communication and connectivity between government and people through ICT based equipments in the city. The government must well deliver the municipal services to people and business at any time they may be located for improving the monetary wealth, excellence of life, and ecological sustainability. The concerned administration of the smart city concept should clearly define and make aware about the objective of the smart city concept in the public domain through different, we can say, social media platform, like through internet and through seminar, webinars, and through um, you can say different medias. Similarly, people of the city become all aware and know about the importance and objective of smart city concept. Then only we can say that themselves take some creative initiative for promoting smart city concept. Yes, thank you, ma'am.
थैंक यू सर। स्मार्ट सिटी मिशन के पहलुओं को आपने बहुत अच्छे से समझाया, जैसा कि आज की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन ये हमारा भारत सरकार का एक प्रयास चल रहा है कि जिसके तहत वो इसके कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के स्मार्ट सिटी को एस्टेब्लिश करना या इम्प्लीमेंट करना, ताकि बेस्ट रिसोर्सेज मिलें। सर आपने इसके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं ये कमल गोयल। आप अपना पेपर रिपीट करना चाहेंगे? आपका बीच में इंटरनेट की वजह से रह गया था। मिस्टर कमल गोयल। Yes, ma'am. Okay, then please continue it. Please continue it. And now I am audible. Yes. 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 Sorry for disturbance caused to you. It's okay. It's okay. Yes, and good morning to all of you, respected chair. My topic of my paper is trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS, and intellectual property rights legislations in India, a conceptual viewpoint. Basically, my paper is focuses on that how the TRIPS is used in India. कि ट्रिप्स के आने की वजह से भारत के अंदर क्या क्या लेजिस्लेशंस आए, जो पहले लेजिस्लेशंस थे उनमें हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स करी। तो मैं सबसे पहले वही अमेंडमेंट्स पे लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास आता है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट प्री ट्रिप्स एक्ट था हमारा। तो पेटेंट एक्ट आने की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल पेटेंट एक्ट इज 19 came into force on 1970, but the first amendment after the introduction of TRIPS came in 26th March 1999. Basically focuses on filing of application of patent in the field of drugs, medicines and agrochemicals. And the next is provisions of exclusive market rights. The second is the Indian patent rules dealing with international applications under PCT, कि हमारे जो रूल्स हैं वो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस को देखते हुए कंप्लाई करें। जो हमारी सेकंड अमेंडमेंट आई दैट केम इनटू फोर्स ऑन 20th May 2003। मेन थिंग इसमें क्या थी कि जो टर्म ऑफ पेटेंट था अर्लियर दैट इज 14 years, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्स ये हमारा 20 years का हो गया। एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन वाज मेड इन कन्फर्मिटी विद ट्रिप्स। जो ट्रिप्स ने इन्वेंशन की डेफिनेशन दी, हमने भी वही डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी, नई डेफिनेशन लेके आई। एक अपीलेट बोर्ड हमारा आया दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्स। थर्ड अमेंडमेंट जो हमारी आई, एक सेक्शन का डिलीशन करा, और जो हमारा प्रोविजन था फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर कि हम एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स लेके आना चाहते हैं, हमने यहाँ पर उसको क्या करा, अबोलिश करा। इस तरीके से हमने 3 अमेंडमेंट करके ट्रिप्स को पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट के साथ कंप्लाई करा। द सेकंड इज कॉपीराइट एक्ट। Copyright Act is also the pre-TRIPS Act, but with the introduction of TRIPS by WTO, there is amendment in the year 1999 by the insertion of Section 40A that focuses on power of central government to Chapter 8 to broadcasting organization and performers in certain other countries, and insertion of Section 42A, where the power to restrict rights of foreign broadcasting organization and performers. In year 2012, the second amendment came that focuses for the compulsory license for the benefit of disabled and statutory license for cover versions. And in 2021 there are some amendments that are notified, that includes publication of a copyrights journal has been incorporated and eliminating the requirement of publication in official gazette. Then we have Industrial Designs Act 2000. It is after TRIPS Act. जो हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट है वो ट्रिप्स के बाद आया। अभी हमने जो पीछे कॉपीराइट पढ़ा और पेटेंट देखा वो ट्रिप्स से पहले था। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन आया वो ट्रिप्स के बाद आया, जो कि फोकस करते हैं कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन इज एंटाइटल्ड टू लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हिज आईपी। ही कैन लाइसेंस और सेल हिज डिजाइन एज लीगल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन और रॉयल्टी। डिजाइन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स, जो हमारा डिजाइन रजिस्ट्रेशन उसको एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999।
ये एक्ट पहले ट्रेडमार्क ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट 1958 के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के अंदर मेन चीज क्या आई, एक तो आई कि पहले गुड्स होती थी बट मर्केंडाइज, जैसे हमने पढ़ा मर्केंडाइज एक्ट, बट ट्रेडमार्क्स हमने इसका नाम इसलिए रखा कि क्योंकि हमने इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया। सेकंड थिंग कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडमार्क्स के तरफ आए, एनकरेज हों, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो भी क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहे हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कि इंडिकेट टेरिटोरियल इंडिकेशन है एक तरीके की, कि जैसे जब हमारे मन में इंडिकेशन आती है, मान लीजिए हमारे मन में जलेबी की इंडिकेशन आती है, तो हम गोहाना की इंडिकेशन लेकर चलते हैं जहां पर माथुराम की जलेबी। हमारे इंडिकेशन आती है फीकी की, तो हम पूंडरी को लेकर के चलते हैं कि हाँ दैट इज टेरिटोरियल इंडिकेशन। तो वो भी टेरिटोरियल जियोग्राफिकल इंडिकेशन की पर्टिकुलर गुड्स का जो संबंध है, वो जो गुड है वो किससे रिलेट करती है। The next is Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 that focus on rights to plant breeders, researchers and farmers who have developed any new or extant plant variety। जिन्होंने कोई हाइब्रिड वैरायटी लॉन्च करी है या एक्सटेंट प्लांट वैरायटी करी है, तो उनको राइट प्रोवाइड करते हैं कि दैट द राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द वैरायटी। The next thing is Biological Diversity Act 2002 that came into force on 5th February 2003. The purpose of the act is to realize equitable sharing of benefits arising out of biological resources and associated knowledge so that these resources can conserve and sustain for future। इसके बाद हमारी ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर है, जो कि लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे वर्क करता है, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जो मैटर्स हैं इससे रिलेटेड वो डील कर सके। कंक्लूजन क्या इससे निकलता है कि ट्रिप्स की आने की वजह से हमारा एक सिंपलीफाइड प्रोसीजर हुआ, हमारे पास एक लीगली प्रोसीजर आए कि हाँ लोग पेटेंट्स के तरफ, कॉपीराइट्स के तरफ, ट्रेडमार्क्स के, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की तरफ, इन्वेंशन, इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा की तरफ आगे आए। लास्टली ये सुजेस्ट किया जाता है कि अगर हम ग्लोकल एक थीम है कि ग्लोबल टू लोकल, ये आत्मनिर्भर भारत को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारी एनजीओज को आगे आना पड़ेगा, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज को आना पड़ेगा, हमारी यूनिवर्सिटीज को आना पड़ेगा, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेंशन, इनोवेशन को R&D में हेल्प कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने ट्रिप्स एग्रीमेंट के एक्ट में जो जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। जैसे WTO ने ट्रिप्स एग्रीमेंट की स्थापना की थी, उनकी सौजन्य से बना था। रॉयल्टी और लीगल प्रोटेक्शन जो लोगों को मिल सकती है उसके बारे में भी बताया। तो पेपर प्रेजेंटेशन का आपका जो ये आज का विषय था उस पर आप अप टू मार्क रहे हैं सर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सिरसा से हेमंत दहिया, क्या वो हमारे साथ जुड़े हैं? उनका कॉपीराइट के विषय में उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना है। हेमंत दहिया। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट डेलीगेट को हाँ जी डॉक्टर कुंडू सर, आप नेक्स्ट जो है इसको समअप करने से पहले मैं चाहूँगी कि सर आप थोड़ा इस विषय को और इस पे थोड़ा सा और चर्चा कीजिए, क्योंकि डेलीगेट्स हमारे पास जो लिस्ट आई थी वो 5 लोगों की थी, 5 में भी ये 3-4 लोग ही जुड़े हैं, इसके बाद 2 लोग जो है उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो सर मैं समअप करूँ? हाँ, तो सर उससे पहले आप थोड़ा बताइए, तो फिर मैंने जो अपने लेवल पे इस चीज को, विषय को समझा है, वो मैं सब भी जरूर कहना चाहूंगी। Okay, okay. So, Nice presentation have been done from the participants. I should elaborate so many things which are very much related to this aspect. Generally, we think only and only about the IPR, intellectual property rights. However, it is the time to think about the global intellectual property rights, because of this aspect is very much important in this case. As I have stated, global intellectual property rights
where the term has been used, why the relevance of this term is here. It is related to UN General Assembly, who has adopted Sustainable Development Goals in 2015. A short term is SDGs, Sustainable Development Goals. Because of the SDGs, these are the goals which emphasize the connection between intellectual property rights and development by establishing various goals. One of the goal is very much important, which has been elaborated, that is related to IPR. SDGs that can be viewed in light of the intellectual property rights. A particular scenario has came into force and it came in front of us. The target 3B of that UN Assembly state that flexibilities within the agreement on the trade related aspects of intellectual property rights shall be used to protect public health by enabling access to affordable medicines and vaccines for both communicable and non-communicable diseases. Mean to say, in simple words, that the SDG will be adopted through the IPR in different sectors. Different goals can be achieved. One of the goal is sustainable development. If we are willing to sustain in a development or the developed society or the developing society, then we have to focus on following areas. And these areas are, if I convey SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, out of them, there are 36 or 30 goals are there. But I am focusing upon those areas which are indirectly or directly related to the intellectual property rights. The first goal is Sustainable Development Goal 2, that is related to ending the hunger, achieving food security, improving nutrition, and promoting sustainable agriculture through intellectual property rights. Because our farmers are there, they produce different varieties of the crops, but no one has tried to get patent. You see, there are so many achievements in terms of the field or in terms of the farmer or the cultivation. What you will see, one farmer has produced 2 meter long a particular product or 2 feet long lady finger, but they have not get patented it. Why not? However, these are the records of the Limca Book of Records and the other book of the records, but they are not tried to get it patented. That's why the first point is that Sustainable Development Goal second is saying we have to reduce the hunger by creating so many cultivated or very much important the hybrid crops, but they should must have patented first. And the second one is Sustainable Development Goal 3, which ensures that healthy lifestyles and promoting well-being for all ages. It doesn't mean that our kids must be healthy, our youngsters must be healthy, our old age person must be healthy. No. The Sustainable Development Goal of the UN Assembly are saying that we all must have the good health. It is very much good challenge before us, and we have to sustain ourselves by way of getting the healthy conditions, having the high quality lifestyle or the healthy lifestyle. And the next one is Sustainable Development Goal 4. The goal ensures that all students receive a high quality education that is inclusive and egalitarian and encourage them to continue their education throughout their life. It doesn't mean, okay, we have to take the education up to 10th, up to 12th, up to graduation, post PhD, then stop. No. This goal is saying that we have to create new ideology, new innovative ideas in your mind, in your brain, and invite the people
to elaborate, to explore, to elaborate, and to express it among all. If you will express, then so many ideas will come. And then you will see which idea is patentable, which idea is your intellectual property. If I, as I told in the previous point, that we have so many ideas, so many points. If I am clapping with one hand, then it can be patented, as I told earlier. Moreover, I can ring a bell in different modes. I can give a different voice, different tone, that can be patented. What are these? These are intellectual properties. If you see, one more example I am giving to you before this achievement of this education. You know very well, another concept is going before us. What is that? In our villages, in the middle of the villages, there are so many persons who have left their houses built, but no one is using it. Now the villagers have to collect a fund and they have to create a library system at the village level. Similarly, in the cities, what will happen? They will be a property which will be the bundle of the intellectual properties. And then you can get the idea from them so that we can sustain in a development way. Another point, sustainable development goal 7. What the seventh goal is saying? Ensuring that everyone has access to energy which is affordable. Yes, solar energy may be there, electronic energy may be there, but everyone has to access. If we are not able to access the LPG or CNG or etc., then we are not able to say that we are intellect or we have the intellectual property or we can survive for a long run. The another goal is saying encouraging an inclusive and long-term economic growth. Sometimes we feel that the price of the diesel, petrol is increasing day by day. But for the development of an economy, it is very much necessary. If we are not able to rise the inflation rate, then being economist, we are not able to say, okay, our economy is growing. No. If the union government of India or the central government of India will not impose the GST, then we are not able to collect the GST. Nowadays, you can see there is a $5 trillion economy is going to happen in near to 5 or 10 years. Why it is happening? Because of we all the persons. It doesn't mean only the employed or industrialist. No, everyone who is the citizen of India, he or she has the contribution in the economy of the India as well as the world. We have not to underestimate one. We have to increase them. Okay, please come and join hands for the boost of the economy. Therefore, to maintain the long-term economic growth, we have to have the reliable and modern technological equipments so that we can collect the funding or the funds from our citizens as well as from the abroad. Another target is there, SDG 8. What it says? It is saying that economic growth as well as the productive employment. If there is no employment generation, then we are not able to say that okay, we can encourage our citizens to boost the economy. No. Every individual is employer. Today we are speaking with one to one. Some of the persons have joined in the different mode of this seminar. Your Department of Commerce, Internal Quality Assurance Cell, and Department of Higher Education, and your college, Manohar Memorial Postgraduate College. They have collabed together. 1+3. There is 4 strategic approach. 4 components are there. What are they doing? They are doing the productive employment generation. If I am willing to speak, you can speak.
If another participant is willing to speak, you have given a platform to them. What it shows? It means to say you are giving the opportunity to those people who are having no any platform to speak before the society, before the economists, before the scholars, before the teachers, before the administrators. Why it has happened? Because of we are willing to achieve our inclusive long-term economic growth as well as educational growth. Another goal is there, taking immediate action to tackle climate change. That is the goal number 13. Sustainable development goal 13 is saying that what we have to achieve through IPR. There are so many changes in the climate every day. In the morning, different climate is there. In the evening, different climate is there. But due to that, we have to focus upon on our intellectual property rights. What kind of the intellectual property is to be used for the control mechanism of these situations? If the glaciers are going downfall or our mountains are going fall down, what is the solution of that? The solution is to be given by the intellect or intellectual people. If there is no any intellectual capacity is so much strong, then we are not able to get or achieve that particular goal. Therefore, I should focus on different parameters. First, through IPR, you can achieve IPR and health. Health system can be broadened, can be make healthier with the use of the intellectual property rights. You know very well, in our Vedic philosophy and our Indological society or the Indian philosophy, there are so many medicines which are available in our kitchen garden, at our home, but no one is aware how it has to be used or how it will be used. Therefore, firstly, you have to get it patented. You know very well, respected my chairperson of this session, Professor Jyoti Nagpal. You see, in 1995, there is a long discussion on the patent of turmeric as well as neem. There was very much clash between different nations. Indian are saying, okay, it is my property. US is saying it is my property. When we go in fast, our Vedic philosophy, our Indological philosophy is saying that we have the first one, the person or the first country who has used the turmeric as a medicine, as a the part of the our food. But why it has not been get patented earlier? Why we are chirping and whispering today? No. As and when you will create any idea in your mind, firstly you have to elaborate it and get it patented and then explore outside. What we do, we share our ideas with different people and another person is getting copied of that idea. What will happen? They get patented before you and you are the loser at that moment. That's why to achieve these sustainable development goals, we have to come forwards and we have to introduce such kind of the cells in our colleges, schools, as well as the universities. In your college, we must have an IPR cell. We must have our university, we have established in 2015. The first cell, IPR cell, is there. Every school must have also IPR cell so that the people, the student, the stakeholders, when they will visit that cell, they will see and one question arise in their mind: what is the meaning of the property? What is the meaning of the right? What is the meaning of the intellectuality? If such kind of the scenarios to be developed by us, by our teachers, by fellow colleagues, by students, by scholars, then we will be very much tax savvy at that moment. And as and when you will feel easy about the patent registration, then there is no any limit. You will do the work limitless.
because of every day from morning till evening, even you are sleeping, so many ideas will come in your mind, in your brain, and they skip. I will take an example of Einstein. What he did, he has used every time a diary and pen below the pillow. Why? As and when any idea will came in his mind, he immediately woke up and noted down in his diary. Because of in the morning that idea can be skipped. Therefore, it is a healthy practice, or we must have to follow that we have to note down these ideas. At any moment, any idea will emerge in our mind, in our brain, because of that idea may be property of you at any moment. Today, you are not in the capacity to create so much things, but after 2 years, 3 years, you may be able to develop such kind of the things. Therefore, we must note all these ideas. And secondly, I must congratulate to the organizers of this event. Dear participants, they have elaborated one by one. Mr. Kamal Goyal, who has started the PIPS point, trade-related aspects of intellectual property rights, has been amassed by the World Trade Organization. He has elaborated the Patent Act 1970, which has been amassed, and then different amendments he has communicated to us. And one of the most important thing, what we have to drive from his paper, that is geographical indication. We must have the geographical indicators and we must explore. You see, in Hansi, when you are traveling Hansi, then an image of the Hansi ke pede will emerge in your mind. Every product has different flavor of that particular area. And that flavor can be registered, can be patented by that producer. But the owner of the Hansi ki pede, Messrs. Dulichand, don't know about the patent registration. It is the duty of the educational institutes or the intellectual, they have to communicate. Okay, gentlemen, these are your products and that is your mixture and you have to produce. In case of the Sirsa, Pakodi is very much famous. Name is Bhanu. What is that? That is geographical indicator of that area. When our product is disseminating the information about our geographical conditions, then we have to explore and we have to grab that opportunity by way of getting the registration of the patent of that product. And moreover, hybrid varieties. If we are willing to focus on the varieties which are being given or the hybrid varieties which are available with us, we must categorize them and then get registered with the others. The another speaker, Madam Tanya Mehta, she has started with the logo RCPM, RCPN trademark. R meant for rights, C copyright, P patents, T M trademarks. Well presented, but I should focus upon it with 2 points: infringement and plagiarism. Generally, we pronounce the word plagiarism, however, it is the word is plagiarism. And another one is infringement. In the next session, Professor Ashok Makad is there. He will tell about these things, what is the legal sanctity of these terms. However, being the scholar of the commerce department, I must convey we should not avoid anything. We must follow the rules and regulations which are being prepared by different bodies of our state government
local government, and the union government. If we will not able to follow, what will happen? Another person has a chance to get it, infringe it. They will get it copyright. They will do the piratation. They will do the pirated copy of that. To avoid these things, we must follow the whole process. How I have to file the patent, what is the process of the patent, where is the office of the patent, and through which channel I have to go for that patent. I must have to share one example with you all. In 2015, NAC assessment process is going on. The team is with us. Being the coordinator of IQAC, I met with them. They asked, okay, your university has one patent. Who have got it? Particular teacher, I named that. Another scholar is there, but the address is of that scholar is outside the university. They commented on it. No, if you have utilized the resources of or the labs of the university, the patent must be registered in the name of the university or the institution, not in the name of the person concerned only. Our university must be the party of that in the Patent Registration Act as well as the patent registration documents. Therefore, we must have to follow these rules and regulations. Another point is, or the another speaker, Mr. Satyanand, who has elaborated ICT and smart city vision. To elaborate it or to express more about this, there are four strategies for the smart cities. One is retrofitting, mean to say we will not broken the old buildings, we have to develop in a different way for renovation, you can say. Another one is redevelopment, we have to regenerate the building on that space which was already available. Third one is greenfield development, we have to create green belt to safeguard the climate, to safeguard our energy solutions and natural points or the natural properties. Another one is pan city development. Pan city development is saying that we have to elaborate economical transportation system, e-transportation, e-visitors, and other platforms. With these words, I again congratulate to all the team members, all the participants who have elaborated a lot. However, they are the presenters are three, no problem. But is a good platform which is given by this esteemed college and esteemed teachers. I must congratulate to everyone, Department of Commerce, IQAC, and all chairperson and senior my colleagues, my fellow colleagues, my senior teacher. Now the mic is to Professor Jyoti Nagpal ji. Ji, Madam ji. Kinja Chaudhary, you can जी सर unmute. Okay. I extend my heartfelt thanks to Kundu Saab. Sir, you have paid an unwavering attention throughout this session. I remain most grateful for the attention with which you sat through all the proceedings. I personally admire you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Now, we will disperse for a short lunch break and will come back at 1:30. जी मैम, थैंक यू। There is a lunch जहाँ break तक and we गुरचंद will... दास जी से, मैडम मैं नमस्ते कर लूँ एक बार गुरचंद दास जी अरे से बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद सर, भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा आपने समय निकाला और बड़ा एक्सप्लेन किया सभी स्पीकर्स के बारे में। नहीं आपकी मैं ये समझता हूँ भाई साहब, ये क्वार्टर 4 अप्रोच है ना आपकी, बहुत बढ़िया है। अरे अरे वाह जी वाह, धन्यवाद चारों सर। लोगों को जोड़ लेते हैं आप। अरे अरे ये तो आप भी देख डायरेक्टली, लीजिए, आप 4 लोग ही हैं स्क्रीन के ऊपर। दैट इज अरे क्वार्टर अरे 4 अप्रोच। अरे वाह जी, थैंक यू मैडम। मैंने सारा मैडम धन्यवाद। नागपाल नमस्कार।
Welcome back. We are here with this another session of webinar on IPR. We have already heard to Professor Surinder Pal Kundu, and I thank him. Now, I would like to invite for this technical session Dr. Ashok Makkar. Dr. Ashok Makkar, he is Chairperson, Department of Law, CDLU Sirsa. He is the head legal cell, CDLU Sirsa, has attended and participated in approximately 80 international and national seminars. He had published various research papers in national and international journals of repute. He has also participated as keynote speaker in various national and international seminars. Now, for further proceedings of this technical session, I would like to call upon Professor Mahesh Mehta to share the screen and carry on the proceedings. Over to you, sir. Me in this second technical session, and I'm lucky that I've been asked to act as chair person in this session, in which my friend, my guide, my philosopher, Professor Ashok Makkar, and he'll be sharing his views on the topic current issues in intellectual property rights in India. And Professor Makkar doesn't need much introduction, as he's a great friend not only to us, but he has a great bonding with this institution. And whenever we ask him to come to our college in seminars, in conferences, and even in online webinars also, he never says no, and he loves coming to this college, loves talking to us, loves talking to our students, and everybody knows that he is one of the most sought after resource persons from the university. And right now he's heading the Department of Law, and he's also legal advisor to the university. And now I should not take much of time, because now it is second technical session has started, and there are viewers who are glued to their cell phones, and they would like to listen to our resource person for this second technical session. Now it's over to Professor Ashok Mukherjee, and yes, welcome, sir. And now it's over to you. Thank you, Mesh Mehta ji. Thank you. You're welcome, First sir. of, first of all, I want to congratulate Professor Gurcharan, Principal, MM College, Fatehabad, and he is very laborious and he is very keen to arrange, organize numerous seminars, conferences, workshops, and he is very social person. Then I would like to thanks Professor Mehta, Head Department of English, Professor Devendra Gera, Head Department of Commerce, my friend Robin Anand, Professor Kinja, Tanya Mehta, all persons who are participating and who are in this seminar, organizing in this seminar. I am very thankful to all of you. The topic is very burning topic, and one thing is very sure कि हम सुबह से शाम तक कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे जो हैं कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करते हैं। व्हाट्सएप पे म्यूजिक टोन्स, व्हाट्सएप पे क्लिपिंग्स, व्हाट्सएप पे शेयर करना, नेट से चोरी करना, ये सारा का सारा। अब क्या है कि जो इंटरनेट है
ये लार्जेस्ट कॉपिंग मशीन है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉपिंग मशीन है। सुबह 2 घंटे लगाए, पूरे दिन के लेक्चर तैयार कर दिए, पर हमें ये नहीं पता कि उन लेक्चर्स का लीगल फेट क्या है। मैं आपको 5, 7, 10 केस, मिस्टर मेहता, पार्टिसिपेंट कितने हैं? 4 paper वर्क, presenters, 4 to 5 only. You can take ओके, as much time as you feel like, please. ओके, ओके, ओके। Yes. So I will let you know the very interesting cases about the copyright violation, including trademark violation, including geographical indications, including patent laws. So हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, हमें नहीं पता होता हमने क्या गलती की। जब हम लिटरेरी वर्क की बात आते हैं, लिटरेचर पे आते हैं, तो उसे हम टर्मिनोलॉजी दे देते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के ऊपर मैंने एमएम कॉलेज में एक लेक्चर दिया था, छोटा सा, काफ़ी साल हो गए, 2 साल पहले। लेकिन अब मैं प्लेजरिज्म पे नहीं जाऊंगा। अब मैं सिर्फ अपने आप को कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का रिलेशनशिप और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंजमेंट है उसके ऊपर मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा। मैं सबसे पहले हमें 2, 4 जजमेंट्स ध्यान में रखने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हैं। एक केस है अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस वर्सेस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें क्लियर कट एक गाइडलाइन है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप जितने इसमें जुड़े हुए हो, जितने प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लाइफ के अंदर क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है आंसर शीट्स एवेल्युएट करने की, क्वेश्चन पेपर सेट करने की। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। कोई भी क्वेश्चन पेपर दूसरे का कॉपी नहीं किया जा सकता। ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। ये बड़ा फेमस केस है, अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस वर्सेस बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। मीनिंग देयर बाय, मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया किसी सब्जेक्ट के ऊपर। खासकर ये प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स, जहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो दोहा लिख दिया कबीर का, और उसको जो टीचर ने लिख दिया जी इसका जो है ना मीनिंग बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, तो वो कॉपीराइट में कवर नहीं होता। दूसरी बात, जो कॉपीराइट की अगर आपसे बात करूं, तो डेजर्टेशन, पीएचडी थीसिस, ऑल आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, किसी ने एलएलएम की डेजर्टेशन की, किसी ने एमफिल की डेजर्टेशन की, किसी ने एमए में कोई प्रोजेक्ट वर्क किया, ऑल आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन कहाँ पे है? जहां पे लेबर एंगेज्ड है, जहां पे लेबर एंगेज्ड है, स्किल एंगेज्ड है, इंटेलेक्ट एंगेज्ड है, वहां पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन है। अब एक लाइन में मैं आपको फार्मूला बताता हूं कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कॉपीराइट वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, ट्रेडमार्क वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। हाउ वी विल डिटरमिन, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स के ऊपर। हर केस के अलग अलग फैक्ट्स हैं। अभी एक 2, 3 साल पहले एक स्कूल के बच्चों ने कोई भजन गाया था, हरियाणवी भजन था, रोहतक से बच्चे थे कि बड़ी देर में आया रे सुदामा। तो किसी टीचर ने ये क्लेम किया कि ये भजन तो मैंने लिखा था, लेकिन एनीवे उन्होंने कहा चलो अच्छा गाया है, तो मैं इसमें ज़्यादा जो है ना इसमें लीगल उसमें नहीं जाता। दो चीज़ें कॉपीराइट के ऊपर हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए। पहला,
कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना वर्क लिखते हो, जैसे ही आप अपनी डेजर्टेशन सबमिट करते हो, जैसे ही आप अपनी पीएचडी सबमिट करते हो, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हो यूनिवर्सिटी को, जैसे ही आप अपना म्यूजिक कंपोज करके लेके आते हो, जैसे ही आप पोएम लिखते हो, जैसे ही आप कहानी लिखते हो, नॉवल लिखते हो, आपका उसी टाइम कॉपीराइट जो है वहां पर क्रिएट हो जाता है। इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपीराइट अगर करवा लेते हैं तो दैट विल बी द लीगल एविडेंस कि ये जो कॉपीराइट जो है ये हमारा प्रोटेक्टेड था। लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये जितने हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी जो है, फोटो किसी ने क्लिक किया, सपोज कोई वर्ल्ड टूर पे कहीं घूमने गया या किसी हिल स्टेशन पे गया या कहीं भी गया, तो जैसे ही वो फोटो क्लिक करेगा उसका कॉपीराइट वहां पर क्रिएट हो जाता है। नो बॉडी कैन कॉपी दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ। कॉपीराइट उसका वहां पर उसी टाइम प्रोटेक्ट होता है, कॉपीराइट उसका उसी टाइम है, कोई उसकी फोटो को कॉपी नहीं कर सकता। अब फोटोग्राफर क्या करते हैं, फोटोग्राफर पेमेंट लेते हैं किसी मैरिज की, वेडिंग की, कोई प्री वेडिंग शूट, कोई पोस्ट मैरिज शूट, कोई वेडिंग शूट, पेमेंट लेकर के उसके बाद जो है कपल की फोटो अपनी दुकान पे भी लगा देते हैं। दिस इज टोटली इलीगल। उनको पेमेंट हो चुकी है, जैसी पेमेंट होगी कॉपीराइट जो है वो उनके पास आ जाएगा जिन्होंने पेमेंट की है। ये एक बड़े छोटे छोटे इशू हैं जो हमें नहीं पता होते, और कॉपीराइट का हम वायलेशन दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। अगर आप इंटरनेट देखो, इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं songs.pk, गाना.com, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं। अब वो यू कैन लिसन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, जो आपको अच्छा लगता है आप वो गाना सुन सकते हैं, लेकिन उस गाने को आप कॉपी नहीं कर सकते, उस गाने को आप जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी को। अगर आप जैसे ही फॉरवर्ड करते हो, दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, दैट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। हम दिन में सारा दिन करते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप आई फॉरवर्ड कर दिया, कोई भी अच्छा जो है म्यूजिक आया हमने फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, दिस इज टोटली वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। उसके बाद आता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई कंपाइल करना। सपोज आप फतेहाबाद सेक्टर 3 में रह रहे हैं, हुड्डा में, और आपने सारे जितने रेजिडेंट्स हैं उनकी एक डायरेक्टरी बना दी, हु इज द ओनर, हिज वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, वेडिंग डेट, family details, telephone details, everything you have compiled and you have put your labor on that particular thing, तो उसमें लेबर लगी तो दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर जो है वो कॉपी जो है जो लिटरेरी वर्क है। अब मैं आता हूँ टीचिंग से संबंधित कोई दो चार चीजें, क्योंकि टीचर ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो टीचिंग से संबंधित सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अग्रवाल का केस बताया मैंने आपको कि क्वेश्चन पेपर कैन नॉट बी कॉपीड, क्वेश्चन पेपर इज टोटली प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। एक बड़ा फेमस केस हुआ है 2016 का, बड़ा फेमस केस हुआ है, अगर आपने कभी सुना हो, रामेश्वरी कॉपी केस। रामेश्वरी कॉपी केस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रामेश्वरी कॉपी के नाम से फोटोस्टेट की दुकान थी। वो क्या करता था, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड की, जो अच्छी अच्छी, जो कोलंबिया, ब्रिटिश ब्रिटिश जो जितने टॉप के पब्लिकेशंस हैं उनकी वो फोटोकॉपी करके और वो मार्केट में बेचता था। फोटोकॉपी करके 50 पैसा पर पेज, 50 पैसा पर पेज वो चार्ज करता था, उसकी वो डुप्लीकेट तैयार करके उसको दे देता था स्टूडेंट को। अब वो बुक जो है डॉलर में आ रही है, अब डॉलर में जो बुक आ रही है वो सपोज $500 की है या $200 की है, तो वो 50 पैसा पर पेज उसकी कॉपी करके
वो उसको दे देता है स्टूडेंट्स को। तो जो जो पब्लिशर्स थे दे मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके ऊपर स्टे ग्रांट कर दिया कि यू कैन नॉट डू लाइक दैट। फिर वो डबल बेंच में चला गया, अपील में चला गया, अपील में उसने उसके जो है ना स्टे जो है खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, स्टे नहीं है, स्टिल ही इज डूइंग, लेकिन वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि एक फोटोकॉपियर हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है, कुरुक्षेत्र में भी हम देखते थे जब हम पढ़ते थे, सारी यूनिवर्सिटीज में होता है कि जो दुकानदार होते हैं, फोटोकॉपियर जो होते हैं, वो फोटोकॉपी जो है उसकी बुक्स की फोटोकॉपी करके सेट बना करके बेचते हैं, एंड दैट इज टोटली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रामेश्वरी जो है। अभी दिस केस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, and the Supreme Court will decide the final outcome of this case. And so far, no stay is granted, and the same person Rajeshwari जो है, he is doing the same thing. दूसरी बात आती है लेक्चर की। पहली बात मैंने टीचर्स के बारे में बताया कि क्वेश्चन पेपर्स आर टोटली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। सेकंड, बुक अगर आप प्राइवेट यूज के लिए करते हो, लेक्चर देने के लिए कोई प्राइवेट यूज के लिए करते हो, तो दैट इज नॉट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। आप 2-4 पेज 10 पेज जितने आपको चाहिए बच्चों को लेक्चर दे सकते हो, बच्चों को आप समझा सकते हो, दैट इज नॉट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। आप उसमें जो जा करके आप उसमें जो आपका एक लिमिट है उसमें जा करके आप यू कैन नॉट टेक द एक्स्ट्रा कमर्शियल बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद आता है कॉपीराइट ऑफ लेक्चर्स। आपके लेक्चर्स, क्या आपके लेक्चर्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं? द क्वेश्चन इज दिस। आपने क्लास के अंदर फिजिक्स का लेक्चर दे दिया, मैथमेटिक्स में आपने जो है टोपोलॉजी के ऊपर लेक्चर दे दिया, या आपने जो है ना पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो है ना पॉलिटिकल साइंस में पार्लियामेंट के ऊपर लेक्चर दे दिया, क्या वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? इसमें एक नजमा हेप्तुल्ला का केस है, आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट केस, बहुत टाइम लग जाएगा। एक यूएस का केस है वॉल्टर का, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको फाइनल आउटकम भैया बताता हूं कि जो हम क्लास में लेक्चर देते हैं दैट इज नॉट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, लेकिन अगर आप उस लेक्चर को रिटर्न में लेके आते हो या किसी और फॉर्म में लेके आते हो या उसको रिकॉर्डिंग करते हो इन एनी नोशन, आप उसको किसी भी फॉर्म में लेकर के आते हो, तो दैट इज द कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। यानी कि आपने लेक्चर दिया, क्लास में बच्चों को पढ़ाया, आपने ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को पढ़ा दिया, इट्स फाइन, लेकिन आपका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड इफ यू हैव रिकॉर्डेड दैट लेक्चर, और if you have given the notes to the students in your own language, you have given the expression in your own language in that particular notes, so that is copyright protected. अब टीचिंग से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं। डेजर्टेशन है, अब हम इसमें ये प्ली नहीं ले सकते कि बच्चे ने डेजर्टेशन की और वो सबमिट करने के बाद उसको पब्लिश नहीं कराया और मैंने वो डेजर्टेशन उठा के कॉपी करके सबमिट कर दी। अब सामने वाला ये प्ली लेता है कि ये तो पब्लिशिंग वर्क नहीं है। नहीं, चाहे वो पब्लिशिंग वर्क है चाहे वो पब्लिशिंग वर्क नहीं है, वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, राइट। तो उसके बाद फिर आता है आइडिया। कॉपीराइट ऑफ आइडिया, देयर इज नो कॉपीराइट ऑफ आइडिया। आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट कोई आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को ये कहते हो कि फतेहाबाद के ऊपर आपने जो है ऐसे लिखना है, तो दैट इज द आइडिया। अब बच्चा लिखेगा वो कहाँ से शुरू करेगा, ज्योग्राफिकल से शुरू करेगा या हिस्टोरिकल से शुरू करेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से शुरू करेगा, एग्रीकल्चर से शुरू करेगा, कहाँ से शुरू करेगा? वो जब वो लिखेगा उसको एक
राइटिंग में रेड्यूस करेगा, देन इट विल बी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। पिक्चर आती है, सेम आइडिया होता है, लड़का अमीर है तो लड़की गरीब है, लड़की अमीर है तो लड़का गरीब है, वो लाइक वो आइडिया सेम है, लेकिन द म्यूजिक, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो कॉपीराइट जो है आइडिया के ऊपर अप्लाई नहीं करता। इसमें एक बड़ा फेमस केस है, आर जी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स का केस है। आर जी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स का केस है, एंड द केस वाज डिसाइडेड इन 1978 बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि कॉपीराइट का जो आइडिया के ऊपर कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद आता है फैक्चुअल पोजीशन। फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर भी कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता। व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज द इवेंट? मैं ये कहता हूं भी एमएम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर गुरचरण है, और दूसरा आदमी भी यही कहता है कि एमएम कॉलेज के प्रोफेसर जो है ना गुरचरण प्रिंसिपल है, तो दैट इज द फैक्ट्स। इसके ऊपर कहीं कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता, नो कॉपीराइट इज अप्लाइड। फैक्चुअल पोजीशन जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कहीं भी कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर एक बड़ा फेमस केस है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस जगमोहन का बड़ा फेमस केस है इसमें, कि कॉपीराइट जो है वो फैक्चुअल जो पोजीशन है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फिर आता है कॉपीराइट क्या कंसेप्ट के ऊपर अप्लाई होता है। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट? एक बड़ा फेमस केस हुआ है, अनिल गुप्ता वर्सेस कमल दास गुप्ता। एक सीरियल आया था, अगर आपको ध्यान हो, स्वयंवर। स्वयंवर एक सीरियल आया था, तो उसकी जो कॉपी है वो किसी ने की, और उस सीरियल का नाम उसने रखा शुभ विवाह। उस सीरियल का नाम उसने रखा शुभ विवाह, एंड द कंसेप्ट वाज सेम। ग्रूम सिलेक्शन, the liberty was given to the bride to select her groom in that particular event. तो it was held by the honorable court कि जो ये कंसेप्ट है ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर उसके एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स अगर वो रिजेंबलिंग है, बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग है, इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एवरी केस डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, कि क्या वो कॉपीड है या नहीं है। एक ऑर्डिनरी मैन देख करके ये बता दे कि दिस थिंग इज कॉपीड, दिस इज द क्राइटेरिया टू इवेल्युएट वेदर देयर इज इंफ्रिंजमेंट और नॉट। उसके बाद आते हैं स्लोगन। स्लोगन, स्लोगन्स क्या वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये भी। ये दिल मांगे मोर, पेप्सी का एक स्लोगन आता था टीवी पे, अब भी आता होगा मुझे पता नहीं है। स्लोगन्स क्या ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? नो, स्लोगन्स आर नॉट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर उसका कोई कमर्शियल यूज हो रहा है, या वो उसमें पासिंग ऑफ में उसको जो है जुडिशरी जो है कोर्ट जो है उसको पासिंग ऑफ में जा करके देख लेते हैं कि वेदर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट और नॉट। ये जो केस है, ये दिल मांगे मोर, ये बड़ा फेमस केस हुआ है, पेप्सी वर्सेस हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड। पेप्सी वर्सेस हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड का ये बड़ा फेमस केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। उसके बाद आता है फिक्शन। मेहता साहब ज्यादा बता सकते हैं फिक्शन के बारे में। फिक्शन, फिक्शनल करेक्टर। एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, चुलबुल पांडे, उसमें एक करेक्टर था चुलबुल पांडे। तो किसी दूसरे ने भी जो है ना चुलबुल पांडे जो है नाम कॉपी कर लिया। ये केस है अरबाज खान प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट, 2016 का जजमेंट है ये, बॉम्बे हाई कोर्ट का। अरबाज खान जो है सलमान खान का भाई है, उसने ये पिक्चर बनाई थी। उसमें सलमान खान का जो नाम है वो था
चुलबुल पांडे, तो किसी और ने भी चुलबुल पांडे कॉपी कर लिया, तो कोर्ट ने कहा दिस इज द फिक्शन करेक्टर, कोई भी इसका नाम कॉपी कर सकता है, कॉपीराइट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद आता है टाइटल, क्या टाइटल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? क्वेश्चन ये है कि जो टाइटल्स हैं वेदर दे आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। आपने कोई सेमिनार कराया, आपने ये सेमिनार करवा दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन कोलैबोरेशन विद जो है ना डायरेक्टर हायर एजुकेशन, अब इसी टॉपिक के ऊपर हम भी सेमिनार करवा सकते हैं। आपके जो सेमिनार का नाम है करंट इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, अब इसी टॉपिक पे हम भी टाइटल पे सेमिनार करवा सकते हैं। एंड द टाइटल इज नॉट प्रोटेक्टेड। टाइटल, आइडिया, कंसेप्ट, all these are not protected by the copyright. फिर आता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट, किसी चीज को छोटा करके, क्या वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? यस। अब कोई मूवी है 3 घंटे की, उसका ट्रेलर बना दिया, उसको छोटा कर दिया, कोई सॉन्ग है उसको छोटा कर दिया, दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ऑल दीज आर द कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। पायरेसी एक वर्ड आता है, पायरेसी। मुझे नहीं लगता कि किसी कंप्यूटर में, खासकर गवर्नमेंट ऑफिस में, ओरिजिनल विंडो है किसी के पास। फोन करते हैं मार्केट में, लड़का आता है 200 रुपए में विंडो इंस्टॉल करके चला जाता है, एंड दैट इज टोटली पायरेटेड विंडो। तो कहने का मीनिंग ये है कि दैट इज वायलेशन, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। जितने कंप्यूटर चल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स, उसमें जो है विंडो जो है जो पायरेटेड है। फिर आता है ड्रामेटिक वर्क। क्या ड्रामेटिक वर्क कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? यस। अब ये ड्रामा, जो ड्रामेटिक वर्ड है, ये ड्रामा से बना है। अब ड्रामा क्या है वो मेहता साहब बता देंगे, फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ये सारा ट्रेजेडी, ये तो इंग्लिश के वर्ड है। अब ड्रामेटिक वर्क जो है, दिस इज ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। अब ड्रामा का नाम कुछ भी हो सकता है, ड्रामा का नाम शकुंतला हो सकता है, ड्रामा का नाम द्रौपदी हो सकता है, ड्रामा का नाम कुछ और भी हो सकता है, किसी करेक्टर के ऊपर लक्ष्मीबाई हो सकता है। लेकिन क्या ड्रामा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है? क्योंकि उसमें सीक्वेंस आती है, पहले ये करेक्टर आएगा, ये डायलॉग बोलेगा, फिर दूसरा करेक्टर आएगा, ये डायलॉग बोलेगा, तीसरा करेक्टर आएगा, फिर ये डायलॉग बोलेगा, चौथा करेक्टर आएगा, फिर ये डायलॉग बोलेगा, फिर ये म्यूजिक कॉम्पोजिशन आएगा, वो सारा का सारा वो ड्रामा का पार्ट है। तो वो ड्रामा जो है दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। फिर आता है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी इज ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। जो भी कोरियोग्राफी तैयार करता है, जो भी कोरियोग्राफी के लिए तैयारी करवाता है, उसमें इंटेलेक्ट भी लगता है, लेबर स्किल भी लगती है, टाइम भी लगता है, मनी भी लगता है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दैट। कोरियोग्राफी इज ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। म्यूजिकल वर्क बड़ा फेमस केस है, म्यूजिकल वर्क। ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का एक केस है। ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का एक केस है। म्यूजिकल वर्क इज ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। एक पिक्चर आई थी एजेंट विनोद, उसमें ईरान ने कह दिया था ये हमारा कॉपी किया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर कोई गाना बना था, बप्पी लहरी ने क्लेम किया कि ये मेरा कॉपीराइट वायलेट हुआ है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी, उसमें भी जो है ना, आज तक के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें 35-36 गाने दिखाए थे जो दूसरे कंट्रीज से जो है ना कॉपी करके जो है किए हुए थे। उसमें पेंटिंग, ड्राइंग, एनग्रेविंग, फोटोग्राफ, मैंने पहले बताया फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर, मेट्रो रेलवे का जो मैप है दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। मेट्रो रेलवे दिल्ली का जो मैप है दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। आपके घर का जो मैप है दैट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, नो बॉडी कैन कॉपी इट, आपके घर का जो मैप है। फिर उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफ फिल्म, cinematograph film is also copyright protected, sound recording is also copyright protected। उसके बाद आता है अडेप्टेशन करना, चेंज करना,
दैट इज ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। किसी नॉवल को पिक्चर में कन्वर्ट कर देना, किसी नॉवल को ड्रामा में कन्वर्ट कर देना, किसी गाने को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देना, दैट इज एडेप्टेशन। 3 इडियट पिक्चर आई थी, तो किसी नॉवलिस्ट ने कहा था कि बोला ये तो मेरा नावल चुराया हुआ है, तो बाद में उनका कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो वो एक बड़ा इशू हुआ था। थ्री इशू, आमिर खान की पिक्चर थी शायद ये 3 इडियट। उसके बाद कंपाइलेशन मैंने आपको बताया कि किसी चीज को हम कंपाइल करते हैं तो वो भी जो है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इज द ओनर ऑफ कॉपीराइट? कॉपीराइट का ओनर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ द कॉपीराइट? कॉपीराइट का ओनर कौन है? द क्वेश्चन इज दिस। कॉपीराइट का ओनर एज पर एग्रीमेंट है, एज पर एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है। मैं किसी न्यूज़पेपर में काम कर रहा हूँ, एट द कंपनी इज गिविंग मी द हैंडसम सैलरी, आई एम राइटिंग द न्यूज़ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूज़पेपर, तो उसका ओनरशिप किसके पास होगी? उसकी ओनरशिप न्यूज़पेपर के पास होगी एज पर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट एडवर्स है कि उसका कॉपीराइट मेरे पास होगा तो मेरे पास होगा, अदर उसका कॉपीराइट जो है वो न्यूज़ एजेंसी जो भी है उसका ओनर है न्यूज़ एजेंसी का, उसके बाद जो है कॉपीराइट होगा। रमेश सिप्पी वर्सेस शान रंजीत उत्तम सिंह का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है कि जिसने फाइनेंस लगाया है, जिसने रिस्क लिया है, द पर्सन हु हैज फाइनेंस द पिक्चर, फाइनेंस द मूवी एंड हु हैज टेकन द रिस्क, दैट इज टोटली कॉपीराइट जो है उसके पास रहेगा। नॉर्मली कॉपीराइट प्रोड्यूसर्स के पास होता है, एंड द कॉपीराइट कैन बी असाइंड एज पर द एग्रीमेंट। आजकल जो है एजेंसीज को दे देते हैं, सुपर कैसेट इंडस्ट्री, सोनी इंडस्ट्री, टी सीरीज, इनको दे देते हैं कि भाई आप अपनी मार्केटिंग कीजिए, उनके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसमें उनको कॉपीराइट उनको दे देते हैं। उसके बाद फिर कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं छोटे छोटे, जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अब दुनिया भर के जर्नल आते हैं, वो उसमें कोट करते हैं, वो कॉपीराइट में नहीं आते। हमारे साथ क्या होता है, हम बच्चों की पीएचडी थीसिस करवाते हैं या डेजर्टेशन करवाते हैं, तो बच्चे मैक्सिमम जो है डेजर्टेशन में कॉपीराइट जो है इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स लिखते हैं, तो वो जो है वो हम उसको नहीं मानते कि प्लेजरिज्म है, बिकॉज लॉ कमीशंस की रिपोर्ट लिखते हैं, तो हम उसको नहीं मानते कि भाई ये जो है जो कॉपीराइट का वायलेशन है इसमें। अदरवाइज तो आज के टाइम में 2018 की जो गाइडलाइन आई है, यूजीसी रेगुलेशन जो आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उसमें वायलेशन है उसकी कॉपीराइट की। तो इस तरह से जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी वायलेशन कब होगी, कैसे डिटरमिन करोगे, ये सारा का सारा डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस, कि सामने एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का एक आदमी है, द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अगर वो ये देख करके ये कह दे कि भाई ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है, तो वो हम ये मान लेंगे कि दैट इज इन्फ्रिंज्ड, मतलब फैक्ट्स में चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, ट्रेडमार्क के ऊपर भी जजमेंट्स हैं। कुछ 2-4 जजमेंट्स में आपको जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 2-4 जजमेंट्स में आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर मैं पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करूँगा, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूँगा। एक
बड़ा फेमस केस है, टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कनिष्क ज्वेलरी। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कनिष्क ज्वेलरी। एक आउटलेट्स हैं, ज्वेलरी है टाइटन की, टाटा का प्रोडक्ट है, तनिष्क के नाम से, तनिष्क, तनिष्क के नाम से जो है एक प्रोडक्ट है तनिष्क, आपने सुना भी होगा, आउटलेट है। तो किसी दूसरे ने क्या किया, कनिष्क के नाम से जो है ज्वेलरी आउटलेट लॉन्च करे। कनिष्क के नाम से किसी ने क्या करा, कनिष्क के नाम से लॉन्च करे, यानी कि तनिष्क कनिष्क। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो सच रिजेम्बलेंस बिकॉज टी इज डोमिनेटिंग इन तनिष्क and in Kanishk, K is dominating in the Kanishk. So these are the different things. So both are the different things. So ये इसमें resemblance मद्रास हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। उसके बाद एक गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड वर्सेस रोहित एग्रोवेट लिमिटेड का केस आया। एक प्रोडक्ट है मिल्क मोर, मिल्क मोर, और दूसरा प्रोडक्ट आया मिल्क मच मोर, मिल्क मच मोर। तो इसमें रिजेम्बलेंस थी, डिसीव, ए मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस डिसीव हो सकता है, उसमें किसी भी एक आम आदमी को धोखा हो सकता है। तो इसमें जो है कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें इंजंक्शन ग्रांट कर दी, स्टे ग्रांट कर दिया कि ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक केस आया, प्लाई आती है, प्लाई, वुड प्लाई, सेंचुरियन, सेंचुरियन, और उससे मिलता जुलता नाम रखा सेंचुरी, सेंचुरी। ए मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस कैन बी डिसीव्ड वेरी इजिली। अगर आप बात करो रिन, RIN, रिन, और दूसरा वर्ड आता है विन, WIN, विन, तो ये एक डिसेप्टिव है। ए मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस कैन बी डिसीव्ड इन दिस रिगार्ड। उसके बाद एक बड़ा फेमस केस हुआ फिलिप्स, फिलिप्स का। फिलिप्स जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, बहुत सालों से चल रहा है, ब्रिटिश ओरिजिन है इसका। तो किसी ने इंडिया के अंदर फिलिप्स कुकर के नाम से जो है, फिलिप्स कुकर के नाम से लॉन्च किया प्रोडक्ट। तो कोर्ट ने कहा नो, दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। यानी कि मैं छोटा छोटा बातें बता रहा हूं मैं, जो रूटीन में हम देखते हैं मार्केट में कि क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा लीगल उसमें नहीं जा रहा, टेक्निकलिटीज़ में, क्योंकि हर आदमी को भी लीगल टेक्निकलिटी समझ नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात वो करनी चाहिए जो एक आम आदमी को समझ आ जाए। इसी ढंग से एक हिमालयन बतीसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है, हिमालयन बतीसा, और किसी ने लॉन्च किया बतीसा नंबर 777, बतीसा नंबर 777। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे कर दिया, इंजंक्शन दे दी कि नो, दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। कोई भी कॉमन मैन जो है इसमें जो है डिसीव हो सकता है। फिर एक आया जजमेंट एटलस साइकिल, एटलस साइकिल हरियाणा का सोनीपत का बड़ा फेमस प्रोडक्ट रहा है, एटलस साइकिल, ये एक प्रोडक्ट आया। एटलस साइकिल हरियाणा वर्सेस एटलस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। किसी ने फर्म रजिस्टर्ड करवा ली हाउस ऑफ एटलस, हाउस ऑफ एटलस। तो इसमें भी यही हेड हुआ कि दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट, कोई भी आम आदमी जो है इसमें डिसीव हो सकता है। इसी ढंग से बिस्किट आते हैं प्रिया गोल्ड, प्रिया गोल्ड, और किसी ने टी लॉन्च कर दी, प्रिया गोल्ड टी कंपनी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें इंजंक्शन ग्रांट कर दी कि प्रिया गोल्ड और बिस्किट और प्रिया गोल्ड, इट कैन बी डिसीव्ड, बड़ा जो है ना फेमस होने का बड़ा एक मतलब जो है ना आसान सा तरीका है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का। तो एक जजमेंट मैं और बताऊंगा आपको
उसके बाद फिर मैं एक आउटलाइन सी दे करके उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करूंगा। शक्ति भोग आटा आता है, शक्ति भोग मार्केट में कॉमन प्रोडक्ट है। और दूसरा किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया शिव शक्ति। शिव शक्ति शिव शक्ति के नाम से किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और पहले शक्ति भोग आटा। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक सिरप है, सिरप ऐसा ही सिरप जो है कफ सिरप है, उसका मिलता जुलता नाम रख दिया बायोसिलीन, बीसलीन। एक तो शीबा का प्रोडक्ट आता है, तो शीबा में स्पेलिंग होते हैं TOSHIBA, और दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दिया तोशिबा, TOSIBAS, H उसमें से मिसिंग था। तो कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज द मिसलीडिंग एंड दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। ये सॉरी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क का एक इन्फ्रिंजमेंट है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम डेली रूटीन में अगर हम देखें, मैं लॉ की टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, मैं कोई सेक्शन की टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, कौन से सेक्शन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं सिंपल एक बात बता रहा हूं कि बीइंग ए एकेडमिशियन, बीइंग ए टीचर, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई भी पेपर लिखने से पहले उसका सोर्स दे दो, कहां से आपने मटेरियल उठाया। कॉपीराइट वायलेशन से बचो, दिस इज टोटली क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट यू। 2-3 वाइस चांसलर्स का कोई बता रहा था कि 2-3 वाइस चांसलर की जो है ना, उसमें दे हैड टू रिजाइन प्लेजरिज्म के चक्कर में, जो है ना, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट का। तो मेहता सर, I think thank you very much, sir, for your very informative talk. नहीं, मैं आई विल कंटिन्यू आफ्टर द presentation of the papers. I will again continue on this Okay, topic. okay, okay, okay. No problem at all, sir. You're always. I will take another 10 We to would love 15 to minutes. listen to you again, to hear you again. And let me add something to it, as you talked about how we as common people and take things for granted, and because what I feel is कि a little knowledge is a dangerous thing, and but we don't bother that law may take a course anytime, and sometimes with these acts of ours we put ourselves into troubles also. और जैसे यू टॉक्ड अबाउट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, जैसे टीवी पे सीरियल्स आते हैं, आई वुड लाइक टू शेयर just how producers and directors they actually write that any resemblance to actual persons living or dead or actual events is purely coincidental and do not intend to hurt sentiments of any individual, community, sect or religion. This is how they try to try to be on the safer side, and because this is how they actually give it and write in black and white that whatever, if one should not try to go deeper and what Malaki things or and even it may be purely incidental. So, but your talk was quite informative, quite interesting, and because we, I think till date never knew that question papers, dissertation, thesis, they come under protection of this Copyright Act, and how means with registration you become strong enough, and you gave example of many cases also. और कभी कभी हम लोग भी we keep on reading about such cases in newspapers, but still we would like to invite questions from viewers later on. But I can see my friends who are waiting for their turn to present their papers. So I invite Dr. Vijay Goyal
I hope Dr. Vijay, yes. Yes, sir. Okay. He is mathematician. Yeah, yeah. He He's, he is he let is me math, let me let me he is tell you. mathematician, and I think after listening my lecture, he will be very careful while making the question paper. Yes, yes, sir. He's नमस्कार सभी को. I am Dr. Dr. Vijay Vijay. Jain. Let me tell you something about you, Dr. Vijay. Yes, sir. Dr. Vijay is assistant professor, and he's head of the department from this college in this college, and he'll be reading his paper, presenting his paper on the topic intellectual property rights and challenges in higher education review. Yes, it's over to you now, Dr. Vijay. सभी को मेरा नमस्कार. मेरा जो टॉपिक है, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है. मेरा जो टॉपिक रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन. हिंदी में कहें तो बौद्धिक संपदा का अधिकार तथा उच्चतर शिक्षा में चुनौतियां. हम सभी जानते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में दो प्रकार की संपदाएं कमा पाता है. एक तो है बौद्धिक संपदा और दूसरी है बौद्धिक संपदा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सभी जानते ही हैं, धन, मकान, धन दौलत और बैंक, गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब भौतिक संपदा का पार्ट है. और बौद्धिक संपदा में हम ये कह सकते हैं कि इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, एनी आइडिया, इनोवेशन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड पेटेंट ऑन ए प्रोसेस. या यूं कहें हम कि इसमें कई प्रकार की चीजें आ सकती हैं, चाहे वो कला है, संगीत है, किसी प्रकार की खोज है, किसी का नाम हो सकता है, कोई चित्र, कॉपीराइट, पेटेंट. तो अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बौद्धिक संपदा का अधिकार इसके बारे में पढ़ते हैं. पुराने टाइम में हमारे माता पिता या दादा दादी ये कहा करते थे कि धन तो कोई भी चुरा सकता है लेकिन बुद्धि को कोई चुरा नहीं सकता. लेकिन अब जमाना खराब है, लोग बुद्धि भी चुरा लेते हैं. इसी को बचाने के लिए बौद्धिक संपदा का अधिकार बनाया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं. जैसा कि डॉक्टर मक्कर सर ने बताया कि अगर हमें आईपीआर का ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता है, पेटेंट्स कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो हम अपनी बौद्धिक संपदा को बौद्धिक संपदा को यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो हम किसमें बदल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं, और उसको हम रिजर्व कर सकते हैं अपने लिए, उससे हम धन कमा सकते हैं. लेकिन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो है सभी लोगों को मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को मोटिवेट करना, इसकी रिगार्डिंग इनोवेशंस और न्यू आइडियाज के रिगार्डिंग उनको मोटिवेट करना है. IPAN एक नेटवर्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस नेटवर्क. उसके डाटा के अकॉर्डिंग यूके के 68% स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनोवेटिव और न्यू आइडियाज के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वर्क में. लेकिन वही डाटा हमारे इंडिया में 6 to 7% है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हु हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वर्ल्ड, but it has 48th rank in global index in innovations and new ideas. अब तो बात हमारा है, टॉपिक मेरा है कि हायर एजुकेशन में इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस क्या हैं. हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में प्रॉपर्टी राइट्स पे जो हम थीसिस लिखते हैं या पेपर, जो भी सर ने बताया कि क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, इन सब के बारे में बताया होगा. मेन रिसर्च वर्क होता है, हमारे को एपीआई में जरूरत पड़ती है रिसर्च वर्क की, तो उसमें कॉपीराइट एक्ट है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या रूल है, क्या यूज है. तो दो प्रकार से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं. वन इज पेटेंट एंड सेकंड वन इज कॉपीराइट लॉ. पेटेंट इज फॉर प्रैक्टिकल वर्क एंड कॉपीराइट लॉ इज फॉर थ्योरेटिकल वर्क एंड रिटन वर्क. इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर हम काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस. हमारे में इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या, कैसे पेटेंट किया जाता है, क्या कॉपीराइट लॉज हैं. जैसे अब सर ने बहुत कुछ बातें बताई, मकर सर ने, कि कौन सी चीज़ें इस कॉपीराइट लॉ में आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था. तो इसमें मेनली तो सबसे पहले हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो बड़ा एक हिंड्रेंस पैदा करती हैं इस चीज़ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में. क्योंकि
गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या रहता है उनका कि इनरोलमेंट करने पे ज़्यादा जोर देती है, क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर देती है, क्वालिटी पे इतना जोर नहीं होता। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का इंगेजमेंट ज़्यादा होता है, मतलब उनको ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे रहे। इसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकते हैं, जो भी रीज़न है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के में जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे या उसको हैंडसम सैलरी नहीं दोगे, वो कहाँ रिसर्च में जाएगा? क्योंकि सबसे पहले तो आदमी को अपना पेट पालने की चिंता होती है, उसके बाद ही वो रिसर्च वर्क में जाएगा या नई इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा। तो इसके लिए ये भी एक रीज़न रह सकता है। दूसरा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर टीचर्स को, स्टाफ को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। एक नया जो कंसेप्ट आया था 2012 में टीचर्स के प्रमोशन के लिए, एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें क्राइटेरिया है कैटेगरी 3, जिसमें बात करते हैं हम रिसर्च वर्क की। रिसर्च वर्क का क्राइटेरिया, वो चाहे टीचर चंडीगढ़ में पढ़ा रहा है, चाहे वो किसी गांव के रूरल कॉलेज में पढ़ा रहा है या किसी एडिड कॉलेज में पढ़ा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, उसके लिए रिसर्च कंपलसरी कर दी गई है। अब रिसर्च कोई ऐसा है नहीं कि सभी के 100 लोग रिसर्च कर सकें, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, फिर कॉपीराइट्स को ना देखते हुए इधर उधर से कॉपी किया, प्रेजेंट कर दिया, पब्लिश करवा लिया। तो इस तरीके में उनको जानकारी होती नहीं है, तो इसमें वो फंस जाते हैं या किसी भी तरीके की वो गलत काम कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, दूसरा, यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़्यादा हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम करवानी चाहिए, वो नहीं होता है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज सीडीएल यूनिवर्सिटी में नहीं है। सरकार को चाहे या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्रोवाइड करवाए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज पाए। अब जैसे कि कॉलेज के लेवल पे भी ये ड्यूटीज़ बनती हैं, जैसे कि आज हमारे कॉलेज ने ये बीड़ा उठाया है, ऑर्गेनाइजिंग टीम ने, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, कि इस तरीके के प्रोग्राम कराएं ताकि लोगों से हम जुड़ें और उनसे हम नॉलेज ले सकें। आज जैसे मक्कर साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कुछ बातें बताई, तो थोड़ी थोड़ी बातें ही इन सबको मिलके हमारे को नॉलेज मिलेगा, ताकि हम पता लगे आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता करें और इन चीज़ों से बच सकें। और इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हम डिसमिनेट करें, प्रचार करें। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाएं और बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं। ये मेरा टॉपिक था। इसी तरीके से हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे करके कॉलेज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में और प्रोग्राम्स करवा करके इस चीज़ को हम बच सकते हैं बाकी चीज़ों से। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। Vijay Goyal, for giving your suggestions. And I think you are very right when you say that the need of the time is to create awareness and motivate all the stakeholders in general and teachers in particular and students also, so that when they when they have decided that they would like to become teachers in their profession, they would like to enter this profession in this teaching profession, so they should try to become research oriented and try to avoid this copying, this culture of cut, copy, paste. This is what we get to see, and this is one of the biggest challenges which I feel we need to face. Just say I read a long time back, although I would like to share it in lighter vein. If you copy from one source, it is plagiarism, and if you copy from 10 sources, it becomes a research. So, but means I think you need to learn an art, how to read. First of all, I think I would like to give this suggestion to all viewers. They should develop reading habit. They should inculcate reading habit, so that it would be with the help of reading only, reading habit, that they would be able to get ideas, and then would be able to incorporate those ideas. So I can see Principal Sir also on the screen. I welcome you, sir, in joining. I welcome you in this second technical session. And now I can see three more delegates who are waiting to present their papers. So I invite Madam Kiran Bala, and she's a research scholar from Haryana School of Business, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, SAR. And the topic on which she'll be
presenting a paper is copyright issues in academic research. So welcome, Madam Kiran Balaji. It's over to you now. Yes, Okay, sir. Thank you you're so welcome, much, ma'am. sir. I You're am Kiran welcome. Bala, Research Scholar of Gujarat University of Science and Technology, Hisar. Good afternoon, everyone. And my topic of the article is, let us, I just want to share my screen with you. Is it visible, sir? My screen is visible to you? Yes, yes, very much. Please go Okay, ahead. sir. Thank you. Yes. Good afternoon, everyone. I am Kiran Bala. My topic of the article is copyright issues in academic research. Let us start with the introduction part. Academics is an area concerned with enhancing knowledge, and research is the most important instrument for processing data and create new knowledge from it. And academic research is an organized examination and interpretation of the problem so that solution to that specific problem can be sought out. It is a systematic process of collecting data, analyzing it, and interpreting the result for a better understanding of problem in hand. It is not just a collection of information, but a journey from it happens to why it happens. Hence, we can say that academic research is much more focused, comprehensive, and solution oriented rather than just a collection of the data. However, due to lack of awareness, especially in young researchers, they face some difficulties in protecting their work from unauthorized use. So, copyright is a legal way to protect an author's piece of work, and the aim of this paper is to discuss the copyright issues in academic research and to suggest a way to avoid copyright infringement. Now there are few issues. There are few issues which are discussed in this present articles that are in academic research. First is the time management. As the researcher need knowledge of some skills and tools, and researcher find it time consuming to learn those skills. Hence, don't spend enough time to learning those skills. Lack of time management abilities harm researcher in two ways. Firstly, high quality research would not be delivered, and secondly, due to lack of time and eagerness to complete their work early, they may copy already published work that will lead to copy infringement. Second is the library management. I think it is the essential for a good quality of research. A well-equipped library is the source house for the researcher. Many libraries are unable to obtain copies of new reports and other published publication on time. And unsatisfactory library management and lack of digital material can lead to wastage of time and energy on part of the researcher. And second is the need for scientific training. I think if anyone is going to conduct a research, they should have the depth knowledge about the technology and tool which have been to adopt it for their research. Researchers need to have a formal scientific training of the tools, techniques, and method used in their research. They should have a complete knowledge of all the aspects of method used in their research. However, many researchers are conducting their research work without actually knowing the research methodology. This is a problematic situation for a quality research. Next is the insufficient communication with supervisor and expert. If there is a gap between supervisor and the researcher, then I think would affect the quality of the research. And researcher need timely guidance to conduct a quality of research. And however, sometimes researcher is not able to get timely help. Then the poor communication creates barriers in further communication, and it adversely affects the quality of the research. Next is the data insufficiency. While collecting data from primary sources, researchers face many types of problems such as inattentive respondents are there, biased responses, negligence, and lack of trust on the part of the respondents. And in secondary data, researchers face problems of unavailability of the required data, manipulative data are there, non-confidential sources, and so on. That affects the quality research. Next is the lack of confidence and awareness. Lack of confidence in researcher is the most common problem that affects the research quality. Researcher is not sure about the correctness of the result computed by him and tries to manipulate the result as per the literature available to him. This affects the very purpose of the research.
Next is the copyright in the India. In India, copyright is protected under the Copyright Act 1957. The act was amended several times to accommodate the changing need of society and to provide more protection to owners of the work. The latest amendment was made in 2012 to make the Indian law in congruence with the World Intellectual Property Organization Treaty and to extend the provision to provide protection in digital environment. The Act provides mainly two types of right to the owner, that are economic right and moral right. First is the economic rights that allows owners of copyright to enjoy economic rewards from the use of their work by others. And second is the moral rights that allows owners of copyright to take certain measures to preserve and protect their ownership of work. These includes right to prevent other from claiming ownership of one's own work, and right to prevent distortion to modification of one's work that may be damaging to his or her reputations. Next is the what is the copyright infringement? I think we all are familiar with this term. Use of any copyrighted work without the permission of the owner of the right, whether intentionally or unintentionally, result in copyright infringement. It can be the primary infringement, in which work is actually copied without credit to the original owner. An infringement can be secondary, that includes unauthorized dealing in pirated material. Indian Copyrights Act specifies civil as well as criminal remedies against the infringer of copyrights, and copyright owner has a right to damage the against copyright infringement. So researchers should show high degree of academic morality and should not indulge themselves in generating financial benefits from the somebody else's work. There is the next is the avoidance of copyright infringement, that how we can avoid these kinds of issues. We first is the creativity. I think researchers should be creativity, and they should have the capabilities of thinking out of the box. Researchers should not be build something that already exists. They should add something to already existing content or bring something completely new. Next is the copyright law. Researcher must possess the detailed knowledge of prevailing copyright law. Understanding of the copyright law helps a researcher to protect his work efficiently. And next is the intellectual property rights. And researchers should clearly understand the difference between diverse intellectual property rights such as trademark, patents, copyright, etc. And next is the resource availability. I think resource should be availability of the good library resource, fulfill the information needs of researcher, good reading, enhance creative writing. Also, availability of the able resource person induce confidence in researcher to use better tools and techniques. Thus, resource availability can lead to avoidance of copyright infringement. Next is the research awareness. Research awareness generates confidence in researcher and removes situation of self-doubt. Researcher should understand his research problem, research method, and the results. Next is the conclusion part. For quality research, access to the new information and copyrighted content is required to be in touch with the latest development in the field. And access to the new information is the right of the researcher and the society. However, protection of economic and moral rights of creator of content is also of utmost significance. Hence, copyright law must justify these institutions should make their libraries well equipped. Resource person should be invited to learn new techniques. The work of honoring writer and their work is a part and parcel of academic integrity. Any non-conformity with the said integrity is ethically and legally wrong, that leads to loss of academic skills and intelligence. And researchers are themselves responsible for the protection of their piece of work, and they should get their work copyrighted and should always protect their right. When academicians, industrialists, institutions, researchers, and government work in coherence, then only nation develops. Hence, each and every member should perform their duties with a high level of integrity and morality. Thank you. That's all from my side. Thank you, Madam Kiran, for your presentation on the topic copyright issues in academic research. And I think you're able to throw light on various issues which are involved in academic research, and you also gave suggestions how we can avoid this copyright infringement. And because I personally believe prevention is always better than cure, and we should avoid taking things for granted,
because we should try to be on the safer side. And I think this one topic, otherwise, till date, even I was not much familiar about this topic. What does this term intellectual property mean? But after at least listening to resource persons in general, and just in this very session, our friend Professor Shok Makkar, and at least now I know how what does this term, what does intellectual property rights mean, and rights are there like other fundamental rights, but we should know how to exercise those rights, and how to prevent, means we should try to avoid ourselves putting ourselves in any problem, and it is always better to be on the safer side. And as you said, Ki, we being in teaching profession sometimes try to take liberties, try to just we try to keep stealing or keep on copying and try to indulge in plagiarism. So I think what we need is we need to develop research oriented mind, so that we can give we can create better ideas, we can give something better to society. This is what I would like to say. Anyhow, so thank you very much once again. Now let me invite, we have two more speakers waiting for their turn. Dr. Anuradha is, she's from Department of Commerce and from Government College for Girls, Bhudia Kheda, Fatehbad. And she'll be presenting a paper on the topic NGOs in creating awareness about IPR. What kind of role NGOs can play. So it's over to you, Dr. Anuradha. I hope you can hear me. Yes, Am I I? can hear you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, very good afternoon. You're welcome. And just I'm sharing my slides, sir. Just a second. Mahesh, sir, is my slide is visible to you? Yes, yes, very much visible, ma'am. You're welcome. You can start with Okay. your presentation. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Anuradha, Assistant Professor in Commerce, Government College, Bhodia Kheda, Fatehbad. A very nice topic has been chosen for this particular conference. I'm here to present the topic NGOs in creating awareness about IPR. There are many organizations which are needed to create awareness about IPR. As Professor Ashok Mukherjee has said, that there is not much information about intellectual property, and we keep on infringing the rights. We keep on the daily basis, we keep on violating the rules of uh, this intellectual property. So, what should be done to create awareness about IPR? Uh, my paper aims to explore the role of NGOs in the intellectual property field at the national level by examining the influence of NGOs in IPR and by giving a presentation of the main organization involved. A lot has been already said by Professor Ashok Mukherjee, Vijay Goyalji, and scholar Karan Bala. They have explained the nitty-gritties of the intellectual properties, which is creation of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images, which are being used in the commerce. And intellectual property is protected by in the eyes of law by patents, copyright and trademarks. These enable people to earn recognition or financial benefit from what they invent or what they create. By striking a right balance between the interest of innovators and wider public interest, the intellectual property aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. So now the question arises that why to promote and protect intellectual property? There are several reasons, like
Human creativity is the foundation of human civilization, progress, and well being. So, the protection is necessary to encourage further creations, enhancing investments, and stimulating the transfer of technology for strengthening the economic growth of the country. Even protection of intellectual property thus creates new industries and more employment opportunities, which is very much required for any country to develop. This enhances the quality and the enjoyment of life. The intellectual property system attempts to achieve a balance between the rights of the creators and the interest of the society on a whole. So, an environment is introduced in which creativity is flourished for the benefit of all. So, here are some NGOs which are working for the intellectual properties, right? Like creating awareness for them. These NGOs are concerned about issues of IPR in general, but specifically they can be classified into four types, that is, specialized news services, research centers, training centers, and corporate watch. And for all of these NGOs, information is at the core of their work. New services and research centers. These are the providers which give access to up to date information on intellectual property issues. The International Center for Trade and Sustainable Development is responsible for intellectual property rights, which are online, a website that focuses on intellectual property rights and international development. Next is the research centers. Research centers provide an analysis of an issue and make recommendation to other NGOs or policymakers regarding the intellectual property. Third is the capacity building organizations and supportive organization, such as QUNO and 3D3. These are the research centers basically, but with enlarged means of action, including training. They give informal meetings, mediation, conflict mediation, even coalition building, and focuses on practical work. Then there are the corporate watchers. These corporate watchers focus on corporations working in an area which are connected with intellectual property rights, such as pharmaceutical or biotechnology. Now, these corporate watchers are considered to be at the source of developed countries, mostly based in developed countries. They document and condemn the corporation's use of intellectual property and its impact for influencing public opinion. There are some NGOs which are concerned about the access to essential drugs. So, main areas of concerns relating to drugs are how regulations on intellectual property rights influence access to drugs, development and production issues, and especially these are working in developing countries. NIPO. This is the Indian IPR Foundation. This is an NGO which is working for intellectual property rights in India. The National Intellectual Property Office. This is the first and the oldest intellectual property techno legal NGO in India, which was established in 2001. It is a permanent observer with the World Intellectual Property Organization WIPO of United Nations. It is an association of creators, users, and owners of intellectual property. Members of this organization include scientists, authors, artists, filmmakers, musicians, corporate, civil servants, and even academicians, legal experts, and intellectuals, among others. So, this is the organization which is basically working in India for creating awareness about the intellectual property rights. So, here I would like to conclude presentation by stating that a lot had been done, but a lot needs to be done in IPR field. Thank you so much. Can I
Thank you so much, Mahesh. I am done with my presentation. Okay, thank you, Dr. Anuradha, for your beautiful presentation. And it was really, we loved listening to you. And the topic you Thank you, chose, sir. I think it was quite interesting as you talked about the role of NGOs in creating awareness. And you also talked about the need to promote and protect intellectual property. And you're very right. We can say that ignorance of law is no excuse. And you talked about NGOs which are working in these areas, and the way you talked about one NGO and which gives information about access, about information on essential drugs, means which are available, or but I think sometimes we as laymen are not aware that there are NGOs working in these areas. But I think you chose a very beautiful topic, and let's hope after listening to you, our viewers now they become more aware and they can contact, they can seek their help. So thank you once again for your beautiful presentation. So now we are left with I know we would love to hear Professor Ashok Makad again, and we are left with one last paper presenter, Madam Sukhjeet Kaur. And what I've been told is that she's an advocate and is from Sirsa practices in courts at Sirsa. So welcome, ma'am. I hope you can hear me. Yes, sir. Okay, welcome, please. And now it's over to you, please, for your paper. A very good afternoon to all of you. And I am Sukhjeet Kaur. I am practicing as an advocate in the District Bar Association Sirsa. And my topic name is Evolution of the Biotechnologies and Patents. And biotechnology inventions are important for human developments. It is broad area of the biology involving living system and organism to develop and make products or any technological application that used biological systems, living organism or derivatives thereof to make or modify product or processes for specific uses. Thomas Jefferson, the man behind the first Patent Act. Biotechnology has a major impact and the potential in the agriculture, plant, varied, pharmaceutical, health and environment fields, and has seen a new expansion in this field of technology that focuses on the intellectual property rights claimed globally. The most recent advancement in biotechnology research have led to the major transformation in many functional human activities in order to make them sustainable for more human growth and development, and to reassess legal structures and particularity the intellectual property right regimes. Today, biotechnology is a booming industry. I think there is some technical glitch. Uh, I feel there is some technical glitch, and I would like Professor Makkad, yes, Madam Sukhjeet Kaur, I think she is facing some technical problems and she has not been able to continue with her presentation. So it's over to you, sir, again, and we are waiting. We would love to hear you again, please. Yes, Professor Mehta. Uh, so far, so far, we have listened to the three paper presenter, Dr. Vijay Goyal, who is the head of the Department of Mathematics, MM College. जैसे कहते हैं ना दिल की बात कह देना, उन्होंने दिल की बात कह दी
कि जी जो है ना एपीआई को लेकर के लोग इतने उतावले हुए, बिना एपीआई के प्रमोशन नहीं, बिना एपीआई के इंक्रीमेंट नहीं, बिना एपीआई के सीनियर स्केल नहीं। तो ये एक बिल्कुल जो है ना कटु सत्य है कि जो इधर उधर से जोड़ करके, इधर उधर से सर्टिफिकेट्स अरेंज करके और इधर उधर से जो है पेपर पब्लिश करवा करके जो इस ढंग की चीज़ें होती हैं, वो नेचुरली दिस इज द स्पॉइलिंग द एकेडमिक इन्वायरमेंट एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़। अगर हम ये कहें कि रिसर्च रिसर्च नहीं हो रही है, ये तो एक अपनी खाना पूर्ति हो रही है, तो आई डू एग्री विद डॉक्टर विजय गोयल। एंड जहाँ तक किरण बाला जो रिसर्च स्कॉलर हैं फ्रॉम द गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका भी लॉजिक बड़ा ठीक था कि जी रिसर्च में जो है प्लेजरिज्म और इस टाइप की चीज़ें हैं, ये चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। रिसेंटली मैं एक बात बता दूं कि 2018 की गाइडलाइन है यूजीसी की, वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी करूंगा उसमें जा करके 2000 की 18 की जो गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस क्या हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है, रिसर्च एथिक्स। जो लोग पीएचडी कोर्स वर्क करेंगे उनको रिसर्च एथिक्स का भी पेपर पढ़ना पड़ेगा। और रिसर्च एथिक्स क्या है, क्या एथिक्स होने चाहिए, और उसमें कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और वो सारा चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। और इन डिटेल में इस बार हमने जो कोर्स वर्क कराया है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में पूरा सेंट्रलाइज क्लास लगती थी रिसर्च एथिक्स की। उसके बाद डॉक्टर अनुराधा ने डिस्कस किया रोल ऑफ द एनजीओज इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। She emphasis on the role of NGOs and very beautiful presentation by her. तो सुखजीत कौर जी को हम नहीं सुन पाए, शी वाज एम्फेसाइजिंग ऑन बायोटेक्नोलॉजी। तो कुछ केसेस मैंने जो है बताए यहाँ पर, जो ट्रेडमार्क से भी रिलेटेड थे, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड। अब डिपेंड ये करता है, अगर मैं थोड़ा सा कन्फाइन अपने आप को करूँगा, मैं कॉपीराइट से रिलेटेड ओनली एंड प्लेजरिज्म से, क्योंकि सारे एकेडमिशियन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म और वायलेशन ऑफ कॉपीराइट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉपीराइट तो वहाँ भी वायलेट हो सकता है कि मैं किसी की बुक लिख करके और उसको फोटोकॉपी करवा रहा हूँ, तो दैट कैन बी द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। प्लेजरिज्म, कोई मैं लिटरेरी वर्क कॉपी कर रहा हूँ, उसके जो वर्ड्स हैं वो मैंने हेयर एंड देयर इधर से उधर वर्ड कर दिए, और वो वर्ड्स इधर से उधर करने का मीनिंग ये नहीं है कि जो मैंने प्लेजरिज्म जो है ना उसको मैं लिटरेरी वर्क को कॉपी नहीं किया। आई हैव कॉपीड दैट लिटरेरी वर्क। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हर केस जो है आईपीआर का, हर केस जो है, चाहे वो ट्रेडमार्क हो चाहे वो कॉपीराइट हो, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। ये मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस, अगर कोई उसमें डिसीव होता है तो वो जो ये माना जाएगा कि वो उसमें जो है उसमें कॉपीराइट या प्लेजरिज्म या उसके आईपीआर की वायलेशन है। अब रीजंस क्या है इसके, मेन रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स विच इज हैपनिंग। अब रीजंस जो है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। वी आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, हमें कुछ इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने एक दिन कोई अपने प्रोफेसर को जिनसे मैं पढ़ता था, कुछ डाटा मैंने कोई चीज़ व्हाट्सएप कर दी, तो उनका उसी टाइम फ़ोन आया, बोला ये हरकत मत किया कर मेरे साथ, बोला तू खुद भी कॉपीराइट में फंसेगा, मेरे को भी फंसाएगा। तो तो ये जो है सुबह से लेके शाम तक हम जो है कॉपीराइट की हम वायलेशन करते हैं। म्यूजिक टोन्स भेज देते हैं, क्लिपिंग्स भेज देते हैं, कटिंग्स भेज देते हैं, इधर से उधर हेयर एंड देयर जो हमारा जो चलता रहता है। दूसरा, अगर इसे हम ये कहें कि इग्नोरेंस, टोटल हमें इग्नोरेंट है अबाउट इट। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हम पुअर इन राइटिंग,
अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। कोई आदमी गाने में अच्छा है, कोई आदमी कुकिंग में अच्छा है, कोई आदमी म्यूजिक में अच्छा है, कोई टीचिंग में अच्छा है, कोई रिसर्च में अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं और वो हर एक को नहीं मिलती गॉड गिफ्टेड। ऐसी एक राइटिंग है। राइटिंग स्किल जो है दिस इज टोटली गॉड गिफ्टेड और हर एक के पास राइटिंग स्किल नहीं होती। इवन मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं एलएलएम कर जाएंगे, पीएचडी कर जाएंगे, दे कैन नॉट ड्राफ्ट द बेल एप्लीकेशन। उनको एक बेल एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, स्टे एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती। इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे देखे हैं कि जो वोकेबलरी में बड़े पुअर हैं, तो एक उनको ये होता है कि एक शॉर्टकट मेथड जो है इंडिया के अंदर, जो शॉर्टकट मेथड जो है वो अपना लो और उसे जो है अपना। फिर अगला रीजन आ जाता है कंपटीशन में बने रहने के लिए भी। कंपटीशन में हमने बने रहना है कि भाई अगर मेरा साथी एपीआई पूरा कर गया और वो प्रमोशन ले गया तो मैं उसके अंडर आ जाऊंगा। तो वो भी एक रीजन है कि एपीआई को कवर करना या अपने पॉइंट्स कवर करने या अपने जो है एक टारगेट पूरा करना, वो भी एक रीजन है। उसको भी हम कॉपीराइट जो है ना हम वायलेशन करते हैं उसकी कॉपीराइट की। हम उसे जो है ना किसी तरह से हम अपना एपीआई पूरा करने में लगे रहते हैं। मनी मनी इज द प्राइम कंसिडरेशन। लोग पैसे के लिए, जैसे मैंने राजेश्वरी कॉपी हाउस का जजमेंट बताया था, अब वो राजेश्वरी कॉपी हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो क्या करता है, ऑक्सफोर्ड की, मैकमिलन की जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो इन डॉलर्स आती हैं, उनको कॉपी करके उसकी 50 पैसा पर पेज जो है उसको मार्केट में देना। और 50 पैसा पर पेज के वो एक पैसे के लिए ही कर रहा है। वो उसको ये नहीं पता कि मैं जो है ना आई एम इन्फ्रिंजिंग द लॉ, कि मैं लॉ को इन्फ्रिंज कर रहा हूँ, मैं कॉपीराइट को वायलेट कर रहा हूँ। उसको कुछ नहीं पता, बट स्टिल ही इज डूइंग कि भाई ठीक है हम जो है जो हमने पैसा कमाना है, शाम को अपना जो है ना पैसा लेकर के घर जाना है। तो ये एक मनी का है। दूसरा, जितने भी वायलेशंस होती हैं शॉर्टकट मेथड है, एक डिसीव करना। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो चार और एग्जांपल हैं। एक अमृत धारा के नाम से एक मेडिसिन आती है, अमृत धारा, तो किसी दूसरे ने लॉन्च कर दी लक्ष्मण धारा के नाम से। तो लक्ष्मण धारा के नाम से लॉन्च की तो जो है ना डेफिनेटली दिस इज द डिसीविंग, एनीवन कैन बी डिसीव्ड बाय द दिस प्रोडक्ट, दिस दिस इज अमृत धारा। और उसने जो है लक्ष्मण धारा के नाम से जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसी ढंग से जो है कि जो है कफ सिरप आता है ट्रोक्सीडोन, और उसको जो है जोविरॉन के नाम से जो है ना लॉन्च कर दिया। तो फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रोडक्ट है, रिजेम्बलेंस है। तो ये भी एक डिसीविंग है, एक मनी पैसा कमाने का तरीका है कि शॉर्टकट मेथड जिसे बोलते हैं। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाया। टाइम नहीं है जी, मेहनत नहीं करनी है एकेडमिक्स में, पेपर लिखने हैं, हाँ जी सीनियर स्केल लेना है तो इतने पेपर लिखने हैं, सिलेक्शन ग्रेड लेना है तो इतने लिखने हैं, बस वो खाना पूर्ति करके। और आजकल तो मजे की बात है कि एजेंसीज आ गई हैं मार्केट में, वो आपकी पीएचडी भी लिख करके देंगी, डेजर्टेशन भी लिख करके देंगी, बुक भी पब्लिश करवाएंगी, कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट्स भी लेके देंगी आपको, और आपको जो है ना पेपर भी आपके पब्लिश करवा के देंगी, आपकी बुक्स भी पब्लिश करवा के दे आर चार्जिंग द पर्टिकुलर अमाउंट। तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करने का, वो चाहे वो कॉपीराइट की वायलेशन कर रहे हैं, फिर वो साथ में ये कहते हैं जी हम तो आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपका जो मटेरियल है, आपका जो बुक है, आपका जो पीएचडी है, डेजर्टेशन है, इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है। तो ये आजकल लोगों ने एजेंसीज खोल दी हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। अब ये तो बीच बीच में मैं ट्रेडमार्क का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जैसे अभी एक चैनल इन्होंने लॉन्च करने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, खबरें आज तक। तो उन्होंने कहा नहीं, खबरें आज तक दिस इज द डिसीविंग, आज तक चैनल है, दिस इज वेरी फेमस, तो खबरें आज तक जो है इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, जो खबरें आज तक नहीं हो सकता। तो एक डिसीविंग कि एक हर आदमी को पैसा कमाने का लगा हुआ है कि भी किसी ना किसी ढंग से पैसा कमाया जाए, तो उनको कोई लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उस पे आ जाते हैं कि अगला रीज़न क्या हो सकता है हमारा, जो हम इसको जो वायलेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हुआ है, जो हमारी वायलेशन होती है, इसका और क्या रीज़न हो सकता है।
अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल जो है बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, इंटरनेट के ऊपर बड़ा इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट में गूगल में जाके जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हो कहीं ना कहीं से आपको लिंक कहीं ना कहीं से मिल जाता है। फिर कुछ पेड साइट्स हैं, पेड साइट से मिल जाता है। तो एक मटेरियल मतलब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, अपना लैपटॉप लेके या नोटपैड लेके या मोबाइल लेकर के बैठ जाओ, आप अपना मटेरियल उसमें सर्च करके यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट, आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा रीजन जो है एक और है इसमें, पुअर रीडिंग हैबिट्स। हमारी आदतें नहीं है पढ़ने की, पढ़ाई लिखाई छूट गई है। अगर आप कोरोना में देखो तो बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अभी मैं फ्लाइंग ड्यूटी पे चला गया तो एक बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, बोडिया खेड़ा की बात है, अभी 28 29 29 30 31 तारीख को मैं कॉलेज और बोडिया खेड़ा में ही था, मैं एज ए ऑब्जर्वर। तो एक बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, वो लिख रहा था यू, वाई ओ यू नहीं, यू RAARE नहीं, आर, सिंगल आर, मतलब व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला सर पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं कहा वो मुझे भी दिख रहा है, पर तू लिख क्या रहा है? कहते तो अपना मोबाइल वाला वो लिखना भूल चुके हैं जी, अपना जो है ना उनका मेथड जो है, उनका सोच का मेथड अलग हो गया। आने वाले टाइम इनको यही कहा जाएगा कि आपने तो जो है ना कोरोना डिग्री लिया है, इस ढंग की चीजें। तो ये जो है उसके बाद जो, अगर आप वर्ड्स को अगर चेंज करते हो तो स्टिल इट इज प्लेजरिज्म। अगर वर्ड्स आप चेंज कर रहे हैं तो वर्ड्स आपने इधर से उधर कर दिए तो वो दैट इज स्टिल प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जो है वो एक बड़ा सीधी सी बात ये है कि कोई भी आदमी देखते ही ये कह दे कि वर्ड चेंज किए हुए हैं। एक मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इतना नहीं पता, लेकिन वेरिएबल चेंज हो जाते हैं और लिटरेचर में वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। मेहता साहब बच्चों को बताते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बच्चे वो यूज करके वो आगे जाके चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें उसमें जो है। अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किसी को नहीं पता। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो सोनू निगम ने एक इशू, सोनू निगम सिंगर है, उसने एक इशू उठाया था कि जो होटल्स में म्यूजिक चलता है, होटल्स में जो म्यूजिक चलता है, और जो ओला कैब है, उबर कैब है, इन कैब्स में जो म्यूजिक चलता है एंड उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो पैसेंजर्स को जो म्यूजिक सुनाते हैं या होटल में जो खाना खाने जाते हैं उनको जो म्यूजिक सुनाते हैं, या जो डीजे है, ये डीजे पे जो म्यूजिक चलता है, इट शुड बी पेड, जो है ना ये फ्री में, इनको लाइसेंसिंग होनी चाहिए। इस पे काफी इशू हुआ था और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी हुआ है। अगर आप देखोगे डीजे में कोई भी डीजे वाला गाना पूरा नहीं चलाता, वो 2 4 लाइनें चला के फिर चेंज कर देता है, फिर 2 4 लाइनें चला के फिर चेंज कर देता है। आप देखो उसके पीछे भी उसका लॉजिक है, वो ऐसे ही नहीं करता। तो ये एक जो है ना रीजंस हैं इसके, जो मेन जो है इसमें। अब प्लेजरिज्म की अगर मैं छोटी मोटी कोई बात करूं तो प्लेजरिज्म जो है वो क्या है? अब प्लेजरिज्म ये है कि काम किसी और का है, अगर आप किसी और को जो है अभी अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। किसी प्रोफेसर ने किसी और के पेपर थे उसके ऊपर अपना नाम लिख करके और वो पेपर फोटो स्टेट करा करके और वहाँ अपॉइंटमेंट ले ली, डायरेक्ट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो उसमें फिर विजिलेंस इंक्वायरी होगी, विजिलेंस इंक्वायरी में पता लगा कि उस प्रोफेसर ने किसी सेशन जज के भी पेपर चोरी कर रखे थे। ठीक है, और उसके बाद विजिलेंस इंक्वायरी हुई, FIR हुई, एंटीसिपेटरी बेल हुई। अब वो केस चल रहा है, अब वो केस चल रहा है तो किस कंक्लूजन पे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, उसके बारे में तो नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज़ें जो है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट्स हैं मार्केट में फॉर सेल आ जाते हैं। किसी ने कॉन्फ्रेंस कराई, 100 सर्टिफिकेट छपवा लिए, 50 यूज़ कर लिए, 50 किसी एजेंट को दे दिए, ले भाई तू बेच दे, हमारे कॉन्फ्रेंस का खर्चा निकल जाएगा। तो किसी दूसरे का मटेरियल खुद का जो है ना जो एक तरह से बता करके भी ये तो मेरा मटेरियल है। सो दिस इज अगेन प्लेजरिज्म, इसकी प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में आता ही है।
प्रॉपर क्रेडिट ना करना, कोई चीज़ कहाँ से ली है, कौन सी बुक से ली है, कौन सा मटेरियल कहाँ से उठाया है, उसको एक क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी ड्यूटी है कि हम उसको क्रेडिट दें। ठीक है, अगर हम उसको क्रेडिट नहीं दे पाते तो अब कॉमन टाइप्स क्या हैं प्लेजरिज्म के? कॉमन टाइप्स क्या हैं? कंप्लीट किसी दूसरे का वर्क उठा करके जो है उसको प्रोड्यूस कर देना, किसी दूसरे का जो वर्क है वो उठा करके बता देना कि ये तो मेरा है। सोर्स बेस, इनकरेक्ट रेफरेंसेस देना, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेना विदाउट एनी रेफरेंसेस। ठीक है, मेजर वर्क उसका कॉपी कर लेना, ऑथरशिप जो है वो इनएक्यूरेट देना। तो प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। आईपीआर बेसिकली अगर हम इसको कवर करें तो थोड़ा सा मैं प्लेजरिज्म को कवर कर लूँ। कितना टाइम है मेहता साहब मेरे पास? कोई नहीं, यू कैन टेक अनदर 5-10 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ओके ऑल। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि यूजीसी का 2018 का रेगुलेशन है, और वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि बताना क्या है, डरा देता हूँ कि भाई ये जो इसके जो प्रॉपर जो मेथड है टू अवॉइड द प्लेजरिज्म, तो पहला ये है कि प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट दीजिए। जिसका आप पेपर लिख रहे हैं या कोई आप वर्क कर रहे हैं, तो यू शुड क्रेडिट द बुक, यू शुड क्रेडिट द पेपर, यू शुड क्रेडिट द न्यूज़पेपर, यू शुड क्रेडिट द जर्नल, यू शुड क्रेडिट द ऑथर, जो ताकि कॉपीराइट से आप बच सकें जो है उसमें जो है। उसके बाद आपके पास एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका जो नॉलेज है आईपीआर की, कॉपीराइट की, ये नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। उस सॉफ्टवेयर में जा कर के आप जो है ना अपना डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लेजराइज तो नहीं है मटेरियल आपका। अपनी राइटिंग स्किल है वो डेवलप कीजिए, आप अपना लिखने का जो कला है वो डेवलप कीजिए। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि मैंने वहाँ से उठा करके लिखना है। यू कैन हैव द आइडिया, आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है, आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है, कंसेप्ट का कोई कॉपीराइट नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आइडिया कैन बी कॉपीड। रामायण है, रामायण एक आइडिया है, रामायण के ऊपर पिक्चर भी बनी है, सीरियल्स भी बने हैं, दैट इज द आइडिया। लेकिन उसके अंदर जो डायलॉग्स हैं, जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, दैट इज द सेपरेट थिंग। तो साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपको सब्जेक्ट मैटर की साउंड नॉलेज होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप मान लिया जाए मैं कॉमर्स का कोई टॉपिक ले लेता हूँ, मैं सेबी का कोई टॉपिक लेता हूँ, स्टेट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का कोई टॉपिक लेता हूँ, या कॉन्ट्रैक्ट का कोई टॉपिक लेता हूँ, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मेरा फील्ड इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। अब मेरा क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं क्रिमिनल लॉ में अगर कोई कर रहा हूँ तो मैं बड़ा इंटरेस्ट से करूंगा। अगर मुझे कोई रेंट लॉ के ऊपर कुछ लिखने के लिए कह रहे तो मुझे रेंट लॉ की एबीसी भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता रेंट लॉ के बारे में। तो मीन्स कि भाई नॉलेज उसका एक इंटरेस्ट, कीन एरिया जिसे बोलते हैं, कीन एरिया एक हर आदमी का होता है उसमें। अब लॉ के अंदर दुनिया भर के हैं, सर्विस मैटर है, मैट्रिमोनियल है, क्रिमिनल है, फैमिली मैटर्स हैं। अब किसका किसमें, हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, हाँ जी हमने पीएचडी करनी है या डेजर्टेशन करनी है, हम बच्चे से पहले ये पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्रिमिनल लॉ में है, सिविल में है, सर्विस मैटर में है, फैमिली में है, सिविल में है। उस हिसाब से हम उसको टॉपिक असाइन करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि उसके बाद फिर अवॉइडिंग चेंजिंग और रीअरेंजिंग द वर्ड्स, मतलब ये एक बड़ा जो है ना, ये जो मेहता साहब सुबह से शाम तक सिखाते हैं बच्चों को कि जी डायरेक्ट वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें जो रिसर्च में, कि एक चीज़ जो है ना उसको दोबारा दोबारा रिपीट करके अलग अलग एंगल से अलग अलग वर्ड से लिख रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी जो वर्ड्स है, कोई भी जो वर्ड है, सोशल मीडिया से कभी भी कोई वर्ड नहीं उठाना चाहिए। जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो नेवर पिक एनी वर्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट रिलायबल मीडिया। अगर मैं दूसरी तरफ जाकर के ये कहूँ कि सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में, जितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं,
सबसे ज़्यादा रीज़न जो है मोबाइल का है इसमें, क्योंकि शादी से पहले भी लड़कियां फेसबुक पे होती हैं, शादी के बाद भी हो सकती हैं, लड़के भी फेसबुक पे होते हैं, लड़कियां भी फेसबुक पे होती हैं, तो वहाँ पे उनका आपस में ट्रस्ट कम हो जाता है और ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को जो है ना एक जन्म देते हैं। ये तो खैर अलग एंगल है, अगर कोई फैमिली लॉ के ऊपर कभी करवाओगे तो फिर बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कभी भी बिना सोचे समझे अपनी रिसर्च में कभी भी मत लेके आओ। सोशल मीडिया में क्या यूज करते हैं, सोशल मीडिया कभी रिलायबल नहीं होता। अभी कल की बात है, सपना चौधरी की न्यूज चल रही थी, सपना चौधरी एक्सीडेंट में मर गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल जो है वाइल चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द सोशल मीडिया। उसके बाद उसके बाद जो इशू आता है, मैं आपको सिंपल एक पिनल प्रोविजंस जो है मैं वो बता के कंक्लूड करूंगा मैं कि पिनल प्रोविजंस क्या हैं। पिनल प्रोविजंस जो हैं उसके क्या है, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 63A डील्स विद द पनिशमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, 6 month to 3 year imprisonमेंट एंड फाइन 50,000 to 2 lakhs। यानी कि 3 साल तक का इम्प्रीजनमेंट है, मिनिमम 6 month इम्प्रीजनमेंट है और 50,000 से लेकर के 2 lakhs तक का उसमें फाइन का प्रोविजन है। अगर फिर दोबारा इन्फ्रिंजमेंट होता है तो मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 3 year और मिनिमम जो फाइन है 1 lakh एंड मैक्सिमम जो फाइन है वो 2 lakhs का उसमें प्रोविजन है। तो उसके बाद जो है कॉपीराइट में सिविल रेमेडीज भी हैं, क्रिमिनल रेमेडीज भी हैं। सिविल रेमेडीज में यू कैन क्लेम द डैमेजेस, डैमेजेस आप ले सकते हो, स्टे ले सकते हो, ठीक है। जो प्रॉफिट सामने वाले ने लिया, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, वो आप ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज भी हैं। क्रिमिनल रेमेडीज जो है कॉपीराइट में आप जा करके क्रिमिनल कंप्लेंट में जा सकते हो। उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊं, यूजीसी जो है उन्होंने प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018, ये एक रेगुलेशन लेके आई है यूजीसी। इसमें प्लेजरिज्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिफाइन की हैं। मैं इन नटशल ये कह सकता हूँ कि इसमें सर्विस जो है, नौकरी जो है वो टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। इसमें नौकरी टर्मिनेट हो सकती है अगर कोई इसमें प्रोविज़न ये है कि अगर कोई बच्चा कॉपी करता है तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक अगर वो कॉपी करता है तो उसकी वो जो रिसर्च वर्क है वो रिपीट होगा। अगर वो फिर कॉपी करता है 60% तक है तो फिर उसका जो उसका प्रोफेसर है, जो उसका रिसर्च गाइड है, उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन उसकी स्टॉप की जा सकती है और लास्ट में अगर फिर भी अगर उसका जो है उसका जो है ही कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विसेज। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज के टाइम में रिसर्च करना और रिसर्च करवाना ये एक बड़ा मतलब टेक्निकल जॉब है और बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपने जो है छुट्टी, आपके क्वेश्चन पेपर आपको दिए, आपकी आंसर शीट जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपने कोई डेजर्टेशन लिखी है या पीएचडी थीसिस लिखी है, दैट विल रिमेन इन योर कस्टडी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कहते हैं जी अपनी डेजर्टेशन और पीएचडी थीसिस लेकर के आओ। लास्ट में मैं ये बता दूं कि 10 to 40% अगर उसमें प्लेजरिज्म है तो उसको ये कहा जाएगा कि दोबारा सबमिट कीजिए। 40 to 60% अगर उसमें प्लेजरिज्म है तो उसको ये कहा जाएगा कि 1 year बट नॉट एक्सीड इन 18 month, तो उसको दोबारा सबमिट करवाया जाएगा। और 60% से अगर अबव प्लेजरिज्म है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये तो थी स्टूडेंट के लिए पेनल्टीज। और उसके बाद जो है जो रिसर्च गाइड है, जो टीचर है, उसके लिए भी पेनल्टीज हैं। अगर 10 to 14% का अगर उसमें प्लेजरिज्म है तो उससे वर्क विड्रॉ कर लिया जाएगा, कोई भी पब्लिकेशन उसको 1 साल के लिए अलाउड नहीं होगा। 40 to 60% अगर पब्लिक उसमें प्लेजरिज्म है तो उसको जो है एनुअल इंक्रीमेंट के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा फॉर मैक्सिमम 2 years। अगर 60% से ज़्यादा का अगर उसमें प्लेजरिज्म है तो 3 साल के लिए उसको
इंक्रीमेंट से उसको मना कर दिया जाएगा कि उसको इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। तो बड़ा एक पंजाब का एक केस हुआ है। पंजाब में कोई प्रोफेसर थे किसी साइंस सब्जेक्ट के, उन्होंने अपने टाइम में एमफिल की डेजर्टेशन सबमिट की थी और 15-16 साल के बाद ये डिटेक्ट हो गया कि दैट डेजर्टेशन वाज कॉपीड। तो उनकी वहाँ से नौकरी चली गई आफ्टर द गैप ऑफ 15-16 ईयर, जब वो प्रोफेसर बनने के वर्ज पे थे। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल while making research, and the person should have the knowledge of IPR, intellectual property rights, copyrights, and all these plagiarism, legal जो भी है आज के टाइम में हर चीज़ लॉ से जुड़ी हुई है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। सो थैंक यू मेहता साहब फॉर गिविंग मी दिस सफिशिएंट टाइम। और आप ही इनवाइट करते हैं। Thank you very much, Mr. Ashok Mukherjee, for your very valuable tips given to all the viewers in general and to us also. Listening to you has always been a treat, I tell you. And today the topic which Department of Commerce decided to organize the topic, I think before this seminar, at least I can say about me, I was not aware okay, what does this topic mean in detail, but at least today we were lucky to listen to you people, and we were lucky to hear you on the topics on the topic in general, and what is copyright and patent and trademark, and how we have to be very very careful. And in this part, when you talked about ethics in research, and we know, I think we try to take easy routes and easy ways to gain, to gather, and sometimes in the name of API score, in the name of marks, and in the name of promotion, we involve ourselves in such practices, and we also fall prey to the designs of people who are involved in such practices. I think let's hope with the implementation of our National Education Policy 2020, we are able to have sea change, and we are able to, because this is the emphasis, this policy, education policy, the new education policy, National Education Policy 2020, I think throws much light, and it lays emphasis on overall personality of teachers, overall personality of students, and wants everyone, at least teachers in general, to become research oriented, and so that we can have at least a healthy environment, not only in universities but in colleges also. So as the saying goes, all good things come to an end. But I think it was nice listening to you people and listening to a few paper presenters. Sometimes you have to depend on, as when Madam Sukhjit Kaur, when she was reading a paper, presenting a paper, something went wrong. But you have to accept these things when you are organizing an online seminar. So, but anyhow, all, as the saying goes, all good things come to an end. And now it's already it's now going to be 3:20, and now I invite my friend Professor Devendra Gera to propose vote of thanks. Yes, it's over to you, Professor Devendra Gera. We are not able to listen to you. We are not able to listen to you. Yes. I think you should unmute your mic. Yes. So that we can hear you. There is some technical problem. यस सर, धन्यवाद सर। हाँ, now it's आप सभी को नमस्कार। अभिनंदन है कि आप सबने अपना कीमती समय दिया
मुझे आज के इस सेमिनार में वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी दी गई है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इन महान हस्तियों को सुनने का मौका मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र राणा जी, प्रिंसिपल एसटी कॉलेज अंबाला कैंट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज के इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हमारे एमिनेंट स्पीकर मॉर्निंग सेशन में डॉक्टर विकास चौधरी, एनआईटी कुरुक्षेत्र से, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, सीडीआईटी सिरसा से, और इवनिंग सेशन में डॉक्टर अशोक मक्कड़, सीडीआईटी सिरसा से। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आईपीआर के विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई। इसी के साथ मैं उन पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए व इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। इसी कड़ी में मैं अपनी कॉलेज गवर्निंग बॉडी व प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचरण दास जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमें समय समय पर इस तरह के आयोजनों के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और उनकी प्रेरणा से हम अपने कॉलेज में इस तरह के सफल आयोजन करने में कामयाब भी रहते हैं। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम, स्पेशली डॉक्टर रॉबिन आनंद, मिसेस किंजा चौधरी व टेक्निकल टीम, और अपने स्टूडेंट जिसने इस सेमिनार को करवाने के लिए कई दिनों से जो प्रयत्नशील रहे। और अंत में सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। Thank you very much. But you forgot to mention my name and Madam Jyoti's name. Anyhow, we are hosts and. महेश जी, मैं बोलना चाहूंगा, मैं इंतजार कर रहा था कि मेरा भी नाम आएगा कहीं, मुझे भी। सर आपका आया है सर? नहीं, आपका हाँ। नहीं सर, मैं अशोक मक्कड़ जी का धन्यवाद के लिए कि मुझे इनवाइट किया जाएगा। अशोक मक्कड़ जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ा खूबसूरत ढंग से हमें समझाया भी और डराया भी, क्योंकि एक एडवोकेट की भूमिका सही रूप में जो निभाई, आज वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में आपने हमें बताया। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस टेक्निकल सेशन के स्टार्टिंग से लेके अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आज का जो दिन है सौभाग्यशाली से हमारे लिए बहुत बढ़िया दिवस के रूप में जाना जाएगा कि आज इतना बढ़िया सेमिनार वेबिनार के रूप में मनोर मेमोरियल कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये प्रयास किया, और डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन से हमें आदेश प्राप्त हुए इस तरह का सेमिनार करवाने के लिए। एक बार फिर मैं मनोर मेमोरियल कॉलेज की सभी टीम का, विशेष तौर पर महाविद्यालय से प्रोफेसर महेश मेहता जी का और मैडम ज्योति नागपाल का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अनुरोध भी है कि 30 अक्टूबर 2021 को हमारा जो नेक्स्ट डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन से स्पॉन्सर्ड सेमिनार है, डॉक्टर सीमा शर्मा मैडम की देखरेख में वुमेन एम्पावरमेंट पे करवाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अभी से लग जाएं कि जितना इसका प्रचार प्रसार उस सेमिनार का हो सके हमें करना चाहिए। एक बार फिर ऑर्गेनाइजिंग टीम का, विशेष रूप से डॉक्टर रोबिन आनंद, प्रोफेसर कैप्टन घेरा और डॉक्टर विकेश जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you once again, sir. So, thank you everyone, and take care. God bless you all.